This conference will now be recorded. Hello, Ravi sir. So you are not audible. So you are still not audible. Hello. You are not audible, sir. Still not audible? Now audible. Hello. Am I audible now? Yes, Raviji, you are audible now. Okay, okay, ma'am. All right, so let's start the session. So before starting the session, any question, queries, doubts? Repeat the music concept in chat app. Okay. Okay. Or any other doubt, anything else? Any other doubt you have? I will repeat the chat app.
concept again. Music concept again. Audio off show कर रहा है. Audio off show कर रहा है मतलब like you want to speak or like you are not able to unmute yourself or my audio is showing off to you. Because I think I have allowed the mic, camera, everything for everyone. All the permissions are there. All okay. 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 So I think, ma'am, can we start? I think we can start. Shweta ma'am. Yes, sir. Please proceed. Please proceed, sir. You can start. Okay. Okay. All right. So let me repeat this concept of the how we exactly played music. Okay. So in order to play the music, let's understand the things step by step. How exactly we did this particular part. देखो हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस पहले एक बार चला लेते हैं तो डेट टाइम हाय हेलो ये सब हम लोग का एक पार्ट था इस चीज का और आफ्टर दैट वी सेट प्ले म्यूजिक तो इट स्टार्टेड टू प्ले द म्यूजिक ओके देन हाउ एग्जैक्टली द म्यूजिक वाज प्लेड to play the music the basic requirement is that we need a package known as os okay by default we need this package known as os why we need this package हमें इस package की जरूरत क्यों है because os has a method known as start file तो os package के पास एक start file नाम का method है in this start file method you have to pass the file path wherever it is located आपको इसमें क्या pass करना होगा you have to pass the file path wherever it is located so let's say there is a file that is available in a particular directory here. Okay, in songs folder, I have few MP3 files. So first of all, I have to get inside the songs folder. So I will use os.chdir, then songs. Okay, chdir means change directory. I just want to change the directory. So in order to change directory, we have this chdir command. Okay, then I hit enter. Okay, so by default is saying cannot specify the file path. The reason is because we are already inside the songs folder. Let me show you. We are already in the songs folder. And how do we get to know this thing that wherever we exactly are? Get CWD, if you remember this method, that will tell you in which directory you are. So I am in a directory known as users. So I can directly check how many files are there. So there are 3 songs. There are 3 files available in this directory. तो मेरे पास यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर 3 फाइल अवेलेबल है and I want to pick randomly. So for that I am going to import a package known as random. इसके लिए हमें random package की जरूरत है and then random dot choice and inside choice you have to pass your list. Now it will return you. Now it is going to return you one random item from this particular list. इस list के अंदर से ये एक random item उठाकर आपको return करने वाला है. Let's see. So it has returned with this thing. Now let's execute again. This time this. तो हर बार आपको क्या ना एक random file मिलनी शुरू हो जाती है. Now if you're getting this random file, let's put it in a variable song
and then I want to start this song, so I will write start file and then song. This is how it is going to play the song. Okay. Okay, is it clear? So this was the code and this was the procedure we used yesterday to play the song. Anything else? Anyone? Any question, query, anything? If no questions are there, then we'll continue. All right, then let's continue. So today, what we are going to start is web scraping. So today's topic is web scraping. Okay. Now, what exactly web scraping is? Let's talk about it. Web scraping is one of the primary phase or one of the primary part of data collection, like data science life cycle. In data science life cycle, the most important thing is data, obviously. But what are the resources that are available so that you can fetch data from? From where you will get the data? From where you will get the data? Either data will be available in a file, might be data is available in files. Files like Excel file could be there, CSV file could be there, text file could be there, JSON file could be there. So there could be any kind of file available. So data could be in any of the file. Data could be in database as well, like it might be using MySQL or it might be using Oracle DB, it might be using MongoDB. So it could be using any of the database. See, what exactly we are here talking about is that if suppose tomorrow you are going to implement anything that is related to machine learning, deep learning, data science, data analysis, anything. Or suppose you're going to do a job in any of the company who generally works on data science technologies. So my question is, my very first requirement is that do you know how many resources are there to collect the data, or do you know different techniques to collect data from? So being a data analyst or being a data science engineer, it's your responsibility, it's your job to understand कि मार्केट में डेटा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है. You have to learn how to collect data from that resource. आपको सीखना होगा कि डेटा को उस रिसोर्स से कैसे निकाल के लेके आना है. डेटा कुड बी इन एक्सेल, तो मुझे एक्सेल फाइल रीड करनी आनी चाहिए यूजिंग पाइथन. डेटा कुड बी इन अ टेक्स्ट फाइल, सो मुझे टेक्स्ट फाइल रीड करनी आनी चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट हियर, डेटा कुड बी इन एनी फाइल फॉर्मेट, तो आपको वो फाइल फॉर्मेट रीड करना आना चाहिए पाइथन के अंदर. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज कि इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि अगर डेटा चलो ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट ये समझा कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि डेटा हमें पता होना चाहिए कि कहां से आ रहा है. सेकंड थिंग इज अगर वो फाइल में अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो डेटाबेस में अवेलेबल है. अब डेटाबेस क्या क्या होते हैं हमारे पास? डेटाबेस कुड बी MySQL, इट कुड बी MySQL, इट कुड बी Oracle, इट कुड बी MongoDB, इट कुड बी Postgre, इट कुड बी एनी डेटाबेस. वो किसी भी तरह का कोई भी डेटाबेस हो सकता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं तो कोई भी डेटाबेस, क्योंकि डेटा कहीं भी स्टोर किया जा सकता है. इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. कंपनी टू कंपनी मैटर करता है, डिपेंड करता है. हो सकता है कोई कंपनी कहीं पर रखती है डेटा, कोई कंपनी कहीं पर स्टोर करती है. ओके. नाउ आफ्टर दैट, डेटा कुड बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट. अब अगर डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है तो इंटरनेट का मतलब क्या हो सकता है? इट कुड बी अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट. इंटरनेट पर दो तरीके से अवेलेबल हो सकता है डेटा. आइदर इट कुड बी ऑन अ वेबसाइट और इट इज अवेलेबल एज अ सर्विस that is known as API call. So
here we are talking about कि when we generally talk about कि डेटा होगा कहाँ, अगर सपोज डेटा इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर कहाँ है? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर है। वेबसाइट पर कहाँ? कोई भी किसी भी पेज पे हो सकता है। सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट कि इफ आई आस्क यू कि एक प्रोडक्ट लेकर आना है, एप्पल स्मार्ट वॉच, एंड what you have to do is fetch these reviews. Okay, so your job is to fetch these reviews. So now think about it. How you will be able to retrieve these reviews from this web page? Any idea? So you cannot do copy and paste. कि लाइक ऐसा नहीं कर सकते ना कि यहाँ से एक को कॉपी करके अपनी एक्सेल फाइल में रखना शुरू कर दे। कब तक करोगे? देखो जरा, 486 पेजेस हैं, मतलब 4000 से ज्यादा रिव्यूज हैं यहाँ पर। So there are more than 4,000 reviews. So there are 4855 reviews. Okay, 4,880, 4,855 reviews available है Flipkart पर इस प्रोडक्ट के. And your company is asking you to fetch this data. आपकी कंपनी ने क्या बोला है कि आपको ये डेटा, ये रिव्यूज, रेटिंग निकाल कर लेकर आनी है सब. कैसे निकालोगे? So there is only one answer, that is web scraping. इसके लिए क्या किया जाता है? We perform web scraping. Web scraping क्या है? To collect the data from web. वेब से डेटा कलेक्ट करने के लिए ही वेब स्क्रैपिंग जैसा कुछ बनाया हुआ है. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर कि वेब स्क्रैपिंग क्या है, क्यों है. पहले हमने ये समझा है कि वी नीड वेब स्क्रैपिंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम दी वेब. वेब पेजेस से डेटा को कलेक्ट करने के लिए वी नीड वेब स्क्रैपिंग. ओके, सो नाउ आई थिंक विल प्रोसीड. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. After this, after learning about this web scraping, ki why we need actually web scraping, because data is available on a web page and we have to fetch that data using Python. Not every website will give you the data. हर एक website आपको data नहीं देगी क्योंकि आप data चुरा रहे हो. See, if I am going to write a script and that script will be fetching the data of this product, so it's like stealing of data. ये तो डेटा चुराने वाला काम है ना. आपने फ्लिपकार्ट से डेटा मांगा, आपने फ्लिपकार्ट से परमिशन ली, आपने फ्लिपकार्ट से पूछा कि कैन आई लाइक गेट दिस डेटा? नहीं, वी आर डूइंग नो सच एक्टिविटी. वी आर गोइंग टू डायरेक्टली fetch the data, retrieve the data. हम डायरेक्टली डेटा को रिट्रीव करने वाले हैं. So in order to perform this particular thing, we need to use a package known as BS4. एक्चुअली इसकी स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होती है. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दी हायरार्की, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. पहले उसको समझते हैं. ओके, so the very first thing is, okay, so suppose this is the web page from where you have to collect the data. ये वो वेब पेज है जहां से आपको डेटा लेकर आना है. And in this web page there are a lot of things like header is there, footer is there, then some content is there, and then some content is there. Okay, now there is the information that we have to retrieve. Might be it is written the review product reviews. इसके बाद हो सकता है हमें प्रोडक्ट रिव्यूज लिखे हुए हैं वो निकाल कर लेकर आने हैं. वो ये है. नाउ डू यू नो विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू शो एनीथिंग ऑन अ ब्राउजर? ब्राउजर पर, वेब पेज पर कुछ भी दिखाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है? कैन यू नेम इट? नाम बताएं सर आप लोग मुझे उसका सोचकर. which language you are going to use to show anything on output window on browser? That is HTML. Exactly. So HTML is the prerequisite. HTML थोड़ा सा आपको पहले से आना चाहिए. Okay, in case you are not familiar with HTML, then I will recommend कि HTML is the thing जो सबको कभी ना कभी करनी चाहिए. Okay, all right. तो अभी हम लोगों को ये तो पता चल जाता है कि there is this web page, there is this website,
फ्रॉम वेयर आई नीड टू फेच द डेटा। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट होगी किसी यूआरएल पर होगी ना, एवरी वेबसाइट हैज अ यूआरएल। बहुत ध्यान से समझना है हम लोग को, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट वेब स्क्रैपिंग, every website will be having some URL. So this website is on a URL like www.flipkart.com. Okay, तो वेबसाइट किस URL पर है? flipkart.com पर है। Okay, so now I have a Python script. I have a Python script. Using this script, I need to fetch this data. अब स्क्रिप्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम एक नॉर्मल ऐसे बात करते हैं कि अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू सी द डेटा, बीइंग अ यूजर, सोचो बीइंग अ प्रोग्रामर नहीं, कि आपको फ्लिपकार्ट पे जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ब्राउजर में जाकर क्या लिखते हो? flipkart.com, सिंपल। अब ऐसा लिखते ही क्या होता है? जैसे ही मैं flipkart.com लिखकर एंटर करता हूं, ऐसा लिखते ही क्या होता है? सोचो कि जैसे आपने लिखा www.flipkart.com, एंटर, तो बेसिकली आपके ऐसा करने से एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है किसको? फ्लिपकार्ट को। ठीक है, क्या जाता है? HTTP रिक्वेस्ट। You make HTTP request to Flipkart. In return, what you get is a HTTP response. बदले में क्या मिलता है? HTTP response. So it's like कि being a user, you are going to enter flipkart.com and Flipkart is going to make some HTTP request to its server. Okay, Flipkart अपने सर्वर पर जाकर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। तो आपने क्या किया? आपने flipkart.com लिखा ब्राउजर पर जाकर। जैसे ही आपने ब्राउजर पर लिखा flipkart.com, इमीडिएटली फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है। ये रिक्वेस्ट किसके पास गई है? फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास। ओके, तो फ्लिपकार्ट सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट, तो फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है कि हाँ किसी ने रिक्वेस्ट किया है। तो फ्लिपकार्ट का काम क्या है अब? नाउ द जॉब ऑफ फ्लिपकार्ट सर्वर इज टू गिव यू HTTP response, and in response it is going to show this web page to you. इस response में आपको क्या दिखने वाला है? एक वेब पेज। ओके, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। सो इफ वी आर हैविंग सक्सेसफुल रिस्पॉन्स तो बदले में वेब पेज दिख जाता है, अगर फेल हुआ तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सिंपल। ऑल राइट, तो फाइनली दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ अ HTTP रिक्वेस्ट पॉइंट। तो यही चीज हमें पाइथन से करनी पड़ेगी ना। The same thing you have to do using Python. The only difference is this time we don't want this data. हमें response तो चाहिए। अब क्या होगा? Using Python, we are going to make HTTP request to flipkart.com. बदले में वो respond भी करेगा, लेकिन respond करने के जब वो respond करेगा ना, this time we won't be getting this web page. हमें बदले में ये पेज नहीं मिलेगा। If you want this web page, अगर आपको ये पेज चाहिए, तो you need a library in Python known as BS4। तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम क्या है? BS4। अब BS4 का नाम तो ठीक है लिख दिया है हमने, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, दैट इज ब्यूटीफुल सूट 4। ओके, तो HTTP रिस्पॉन्स के बाद अब हमें क्या नहीं चाहिए? हमें वेब पेज नहीं चाहिए था, ये आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए था, हमें पाइथन में चाहिए था। सो इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट इन पाइथन, HTTP रिस्पॉन्स को किसको हैंड ओवर कर देते हैं? BS4। BS4 क्या है? ब्यूटीफुल सूट। ये इस पेज का HTML एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये क्या करता है? एक्सट्रैक्ट HTML ऑफ द वेब पेज, वो निकाल कर आपको दे देगा ये। Am I clear everyone? Is this point clear to you till here? So this is the simple hierarchy that we have to follow. And from the HTML we can retrieve the information. उस HTML के अंदर से जाकर अब हम information को retrieve कर सकते हैं। Okay.
ऑल राइट, सो फाइनली दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसके लिए एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है BS4। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ओके, बाय डिफॉल्ट यू वांट बी हैविंग दिस पैकेज, so we have to execute a command known as pip install bs. So we have to install this library known as bs4. So how you are going to install? You have to open the command prompt cmd। आपको command prompt open करना है और यहाँ जाकर लिखना है pip install bs4 enter. So it will start downloading and installing the bs4 package. In my case you can see it is already installed। ये मेरे को बता रहा है कि requirement already satisfied, कि मेरे मशीन पर bs4 पहले से installed है, so I don't have to install it। Okay, so I hope it is clear to you till here, everyone. So this is how we will get this package known as bs4। All right, let's see step by step process to retrieve the data। Data retrieve करने के लिए जो step by step process है उसको follow करते हैं। Let's open ideally। Now we need to fetch the data। अब हमें data चाहिए। Data चाहिए तो पहले उस URL को request करना पड़ेगा, because every website is not going to return the data to you। हर website आपको data नहीं देगी। Suppose I want to fetch this data, मुझे ये data चाहिए, जितना भी नजर आ रहा है ना सब चाहिए। Copy the URL। The very first step is to copy the URL of the website जिसका data आपको चाहिए। And first of all, import few packages like BS4 is the package that we have to import, and URL lib.request is another package that we need। तो आपको ये दो packages की जरूरत है। The first package is BS4, another package is URL lib.request। हमें इन दोनों packages को import करना है। Then let's take a variable known as path। इसमें डाल देते हैं ये path कि मुझे data लेकर आना है इस URL का। Okay, I want to retrieve the data of this URL। Now in order to retrieve the data retrieve करने के लिए क्या करेंगे अब हम? ठीक है, पाथ आ गया हमारे पास। पाथ रिट्रीव करने के बाद हम लोग जाकर इसको HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक HTTP रिक्वेस्ट टू दिस URL। हाउ? यूजिंग URL open। So using this line we are actually making HTTP request। Getting a point, everyone? In return, what you will get? In return, we will get HTTP response। See, we got this response from Flipkart। Now, if any of the website is not interested to give the data, then you will get the error। Let me show you. This time, let's try Naukri.com। I want to fetch the data of Naukri.com। So I will copy the URL and change my path variable and then again hit this। So this time I am trying to make HTTP request to Naukri.com, but this time it will result in error क्योंकि Naukri.com data नहीं देता, मना कर देता है। See, okay, so not every website is going to give you the data। इसने क्या बोला? HTTP error 403 forbidden। You are not authorized, you are not the authenticated person जिसको data दिया जाए। Okay, so I hope this point is also clear that not every website will give you the data। So whenever you are getting successful HTTP response, this is how it will look like। But if some of the websites are not interested to give you the data because you are making unnecessary request for them, for the websites like Naukri.com and all, they treat this thing as an extra request because they can easily detect whether this request is being processed by a human or by a script। Getting my point? वो बहुत इजीली उनका सर्च कर सकता है कि ये जो HTTP रिक्वेस्ट आई है ना, ये किसी ह्यूमन ने की है या किसी स्क्रिप्ट ने की है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी यूआरएल, जैसे हम किसी भी यूआरएल को हिट करते हो ना, इस मोमेंट पर यहाँ इनको पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है।
ये रिक्वेस्ट किसी ह्यूमन ने की है। अगर कोई ह्यूमन रिक्वेस्ट करेगा तो ब्राउजर पे जाकर लिखेगा www.naukri.com, तो डेटा मिलेगा बदले में। मिला ना? मैं जब naukri.com लिखता हूं तो डेटा मिलता है। तो व्हेन आई राइट naukri.com इन माय ब्राउजर, तो naukri.com को पता चलता है कि किसी ह्यूमन ने रिक्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब सम ऑफ द यूजर माइट बी सर्चिंग जॉब, तो उनको तो ऑब्वियसली मुझे दिखाना ही दिखाना है आउटपुट। बट ये जो आप लिख रहे हो ना स्क्रिप्ट, दिस इज अ बॉट। ये क्या है? एक बॉट है। बॉट समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने गेम्स में देखे होंगे बॉट क्या होते हैं। हाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज अ बॉट? देखा है किसी ने गेम वगैरह अगर आप खेलते हो तो उसमें बॉट्स होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली अ बॉट इज? क्या होता है बॉट? बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बॉट? ओके, so you can define bot like कि bots are a software application which run tasks automatically over the internet. Player is not controlled by a person, it is run by a computer. Exactly. ये एक simple bot की definition होती है। automated programs होते हैं bots ना। तो when we talk about some automated programs, तो whenever you are going to request Flipkart or anything, वो easily detect कर लेते हैं कि ये request एक bot ने की है या फिर ये request किसी human ने की है। Okay, they can easily detect. अच्छा, कोई आप में से सोच के बताएगा कैसे? हाउ दे कैन डिटेक्ट? थिंक अबाउट इट।
or any other answers? ओके सो द थिंग इज वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली। देखो मैंने सोचने के लिए इसलिए दिया था कि ट्राई टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि आप ऐसी चीजों को सोचना चाहिए कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। ऑल दी वेबसाइट सर्वर्स, जितनी भी वेबसाइट के सर्वर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी ये फीजिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, आप कोई भी आप किसी भी सर्वर पर बैठे हुए हो, आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि थ्रू दी आईपी एड्रेस, कि एक क्या होता है, उनके पास एक आईपी एड्रेस आता है आपकी मशीन का, आपके इंटरनेट का। उनके पास आईपी जाता है कि ये इस मशीन के थ्रू, इस ब्राउजर के थ्रू सब कुछ पता किया जा सकता है कि किस मशीन के थ्रू, किस ब्राउजर के थ्रू, कितने बजे किसने रिक्वेस्ट की थी। तो एवरीथिंग इज डिटेक्टेड ऑन द बैक एंड। वो सब चीजें वहां पे डिटेक्ट हो जाती है, तो पता चल जाता है इजीली कि ये एक स्क्रिप्ट। अब देखो जब एक स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट कर रही है, बीइंग अ ह्यूमन, जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप ब्राउजर खोलोगे, यू विल ओपन अ ब्राउजर और ब्राउजर से जाकर रिक्वेस्ट करोगे। बट इफ यू आर नॉट यूजिंग अ ब्राउजर, अगर आप ब्राउजर यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग अ ब्राउजर, आप यूजिंग पाइथन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप ब्राउजर तो एक्सेस कर ही नहीं रहे हो। सो इट कैन इजीली डिटेक्ट कि रिक्वेस्ट किसी ब्राउजर से नहीं आई है, रिक्वेस्ट किसी ब्राउजर से नहीं आई, रिक्वेस्ट किसी स्क्रिप्ट से आई है। दे कैन डिटेक्ट। जब वो ये डिटेक्ट करते हैं तो दे विल रिजल्ट इन एरर। नॉट एवरीवन विल रिजल्ट इन एरर, क्योंकि उनके लिए क्या हो रहा है, वो एरर दे ही क्यों रहे हैं, वो एरर इसलिए दे रहे हैं कि कोई बॉट आया है, मैं क्यों उसको डेटा दूं, मैं क्यों उसको अलाउ करूं कि मेरा डेटा ले। तो हर वेबसाइट के साथ ये इशू नहीं है, कुछ के साथ है कुछ के साथ नहीं है। सो द फाइनली द थिंग इज कि नाउ वी नो हाउ टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो दिस इज द पाथ, ये पाथ है जहां से हमें डेटा लेकर आना है। एंड नाउ लेट्स put this in a variable known as response. In my response variable I have http response. Okay, so I hope we are clear till here. The very first step is to simply make http request. All right, now after this, after making http request, the next step is to use bs4 dot beautiful soup. उसको आप अपना response hand over करोगे। In return you will get the complete web page। बदले में देखो आपको पूरे पेज का वो html है ना, वो मिलने वाला है। बदले में हमें क्या मिलने वाला है, द होल वेब पेज, पूरा का पूरा पेज मुझे बदले में मिल जाएगा, सोचो। ठीक है, प्रिंट नहीं करना। इफ यू विल प्रिंट द वेब पेज, आई विल शो यू व्हाट विल बी द आउटपुट। आपके पास देखो क्या आउटपुट आने वाला है अगर आपने उसको प्रिंट किया। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स करो। सो इफ यू विल डू व्यू पेज सोर्स, यू विल सी दिस कोड। ये पूरा कोड मेरे पास आ चुका है। आई हैव दिस होल कोड इन माय पेज वेरिएबल। मेरे पेज वेरिएबल में इस पेज का, एप्पल स्मार्ट वॉच पेज का सारा कंटेंट आ चुका है। ओके, सारा कंप्लीट, बट इन फॉर्म ऑफ HTML। HTML के फॉर्म में आया मेरे पास, पूरा पेज आ चुका है लेकिन इन फॉर्म ऑफ HTML। आई होप इतनी बात समझ आई आप लोगों को। एवरीवन क्लियर टिल हियर? एवरीवन गिव मी अ कंफर्मेशन, यस नो, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? इतनी बात समझ आ चुकी है आप लोगों को? ओके, तो नाउ वी नो हाउ टू सिंपली रिट्रीव अ पेज। अब पेज आ गया है, अब पूरा पेज नहीं चाहिए ना, पेज के अंदर से क्या चाहिए, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेज, फ्रॉम इनसाइड द पेज। पेज के अंदर जाना है, पेज के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आना है। क्या लेके आना है बोलो अब, व्हाट डू यू वांट? यू वांट दिस टाइटल, प्राइस, और ये डिटेल्स चाहिए, इमेज चाहिए, क्या चाहिए बोलो? यू कैन फेच एनीथिंग फ्रॉम दिस पेज। तो स्टार्ट करते हैं टाइटल के साथ। लेट अस ट्राई टू रिट्रीव दिस टाइटल फर्स्ट। पहले इस टाइटल को निकालने की कोशिश करते हैं। So what is the procedure? Pay attention to this part very very carefully. मैं दो एग्जांपल कराऊंगा, एक फ्लिपकार्ट का, एक imdb.com का। तो आपको मूवीज का डेटा निकालना भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट, आपको सिर्फ कितना काम करना है, राइट क्लिक ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ऑन दैट इंफॉर्मेशन, जिस जो चीज चाहिए ना, जो हमें चाहिए, उस पर राइट क्लिक करना है। मुझे प्राइस चाहिए तो मैं प्राइस पे राइट क्लिक करूंगा। ओके, मुझे टाइटल चाहिए तो मैं टाइटल पे राइट क्लिक करूंगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन इंस्पेक्ट।
जैसे ही आप ऐसा करोगे, यू विल सी दिस कंटेंट इज हेयर, बट दिस कंटेंट इज रैप्ड इनसाइड अ टैग। ये एक किसी div नाम के किसी टैग के अंदर बंद है। HTML इज ऑल अबाउट टैग्स। HTML में हर चीज किसी ना किसी टैग के अंदर लिखी होती है। देर इज नथिंग दैट कुड बी आउटसाइड अ टैग। HTML में कोई भी चीज टैग के बाहर नहीं हो सकती। सो एवरीथिंग इज इनसाइड द टैग। गेटिंग माय पॉइंट? HTML में हर चीज किसी टैग के अंदर होगी, टैग के बाहर नहीं होगी। सो इफ समथिंग इज इनसाइड HTML टैग, अगर कोई चीज HTML टैग में है तो टैग का नाम पढ़ना पड़ेगा हमें। div, see there are a lot of div, ये सब क्या है? then a, these all are some HTML tags. Okay, so are you all familiar with little bit of HTML? सब लोग थोड़ा बहुत HTML के साथ familiar हो या नहीं? Familiar हो तो very good. So if you all are familiar with some sort of HTML, थोड़ा बहुत अगर आप HTML के साथ familiar है ना, तो it will help you. So now what you have to do, you just need to understand कि देखो पेज में बहुत सारे div हैं. There are a lot of div. मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी किसी div टैग में रखी हुई है ना? देखो, इतने सारे div लिखे हुए हैं. There are a lot of div tags are available. बट मेरा जो पार्ट है, मेरा जो कंटेंट है, वो भी एक div में है. तो मैं उस div को कैसे फाइंड करूं जिसमें मैं कंटेंट फेच करना चाहता हूं? I want to retrieve only that div which contains the information that I want. जो information मुझे चाहिए ना, exactly the answer is class. तो आंसर इज क्लास. आप देख रहे हो हर किसी टैग के साथ एक क्लास भी तो लगी है. सी, so class will help you to retrieve that information. So let's see the code. Now we will write page dot find what exactly you want to find. I want to find a div. मुझे क्या ढूंढना है? div. अब पेज में तो बहुत सारे div हैं. ये कौन सा div देगा? जो सबसे पहला div मिलेगा ये आपको वो निकाल कर दे देगा. ओके, ये आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, द पेज डॉट फाइंड div, इट इज गोइंग टू रिटर्न द वेरी फर्स्ट div अवेलेबल ऑन द पेज. मुझे वो नहीं चाहिए. मुझे चाहिए ये वाला. यहाँ पर ये क्लास लगी है. लेट्स कॉपी द क्लास. लेट्स सी द आउटपुट. सी, वी गॉट दिस. मिल गया हमें वो कंटेंट मिल गया है. हमें वो टैग और उसका कंटेंट मिल गया है दैट आई वांट टू प्रिंट एक्चुअली. नाउ आई विल पुट दिस थिंग इन अ वेरिएबल. इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं. लेट्स नेम द वेरिएबल एज टाइटल. So this is the product title that we have now, and let's print the text part of the title. So you need to write title dot text and that's it. देखो क्या मिला हमें बदले में? The text title. Okay. So let's sum up this whole script. इस स्क्रिप्ट को समराइज कर देते हैं. एक नई फाइल बनाते हैं. उसमें जाकर देखते हैं क्या क्या किया अभी तक आपने. तो पैकेज चाहिए, एक पाथ चाहिए, उसके बाद यूआरएल ओपन करना है. तो रिस्पॉन्स उसको BS4 को देना है. एंड देन आपको बदले में टाइटल या जो भी फेच करना है इंफॉर्मेशन वो कर सकते हो. एंड सिंपली प्रिंट द टेक्स्ट पार्ट. दैट्स इट. लेट्स सेव इट. लेट्स एग्जीक्यूट. तो पहले एक वार्निंग देता है. इस वार्निंग को अभी रिमूव कर देंगे. ओके, सो दिस इज द आउटकम. यू कैन सी हियर, दिस इज द आउटकम. ओके, तो प्रोडक्ट का टाइटल मिल गया है. नाउ वी नीड टू रिट्रीव द प्रोडक्ट प्राइस. अब इसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है. तो प्राइस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट. Now we have this price available in these classes. So this time I will write price equals to page dot find div comma
class, paste and save and run. I think we have to print the price as well. So I'll write price dot text. Let's see the output now. Perfect. So now we have the product name and product price. Look at the code and just tell me about it if you are clear with this thing or not. If you have any question, query, doubts, anything, please let me know. इस कोड को अच्छे से आप लोग देख लो पहले और कोई भी डाउट्स है तो मुझे बताओ. Clear? Everyone, are we clear? Give me a confirmation. एक बार इसको देख लें आप लोग and just let me know about it if you are clear till here. Response equals to end, page equals to part. Once again, which part? This line you are talking about and this line. Okay. So basically, I told you about that whenever we are making HTTP request. आप HTTP request समझ पा रहे हो क्या चीज है या नहीं? Are you able to understand what is HTTP request? So HTTP request is simply that I have to request Flipkart. I want to request something to Flipkart. Okay, that is HTTP because that's on internet. कोई चीज इंटरनेट पे हो तो वो HTTPS में चलती है, ठीक है? So basic इसीलिए इसको HTTP request बोल देते हैं. तो if I want to request Flipkart, तो Python says I have a package known as urllib.request. तो Python कहता है मेरे पास एक urllib.request नाम का पैकेज है. उसके पास एक open नाम का मेथड है url open. So it will open the HTTP request. ये उस request को open करने का काम कर रहा है. So now the request is being triggered. एक request लगी है किसको? इस URL को. जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, इतना पार्ट एग्जीक्यूट होता है. व्हाट दिस पार्ट इज एक्चुअली डूइंग, इट इज मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू फ्लिपकार्ट. ये फ्लिपकार्ट को एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है. इन रिटर्न व्हाट यू विल गेट इज अ रिस्पॉन्स. बदले में क्या मिलेगा मुझे? एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स मिलेगा. ओके, इन रिटर्न आई विल गेट दी एचटीटीपी रिस्पॉन्स. अब वो जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, द एचटीटीपी रिक्वेस्ट दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग, we will pass that response to bs4.beautiful soup. वो रिस्पॉन्स हम किसको दे देते हैं? bs4.beautiful soup को दे देते हैं. bs4.beautiful soup क्या करता है? It returns you the web page. ये आपको पूरा पेज का HTML निकाल कर बदले में रिटर्न कर देता है. ओके, इन रिटर्न इट विल गिव यू दी वेब पेज. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, बदले में रिस्पॉन्स मिलेगा. उस रिस्पॉन्स को ब्यूटीफुल सूप को दे देंगे. ब्यूटीफुल सूप उस रिस्पॉन्स में से वेब पेज निकाल के ले आएगा, उसका HTML का कोड निकाल के ले आएगा. फिर हम उस HTML कोड में जाकर ढूंढते हैं डिव कहाँ है, कौन से वाला डिव जिस पर ये वाली क्लास लगाई गई थी. वो मुझे मिल जाता है, मैं उसका टेक्स्ट प्रिंट करा देता हूँ. फिर हम पेज में ढूंढते हैं एक और डिव. इस बार कौन सा डिव ढूंढ रहे हैं हम? जहां पर ये वाली क्लास लगाई गई है वो वाला डिव ढूंढो. तो हमें मिलता है प्राइस और उसका टेक्स्ट हम प्रिंट करा देते हैं. ओके, क्लियर नाउ? ओके. Okay, or anyone else, any other query? A response in page is just a variable to assign. Exactly. These are just the name of variables. You can put anything. आप कुछ भी request का नाम doesn't matter. These are simply the name of variables. Or anyone else, any other question? इसके अलावा कोई question query किसी का तो बताएं.
नाउ वी हैव वन प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। अभी हमारे पास एक ही नेम और प्राइस आया है अभी तक। अगर इसको देखना शुरू करें, वी ओनली हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? ये जो बाकी के हैं इनका क्या करें? ये कैसे आएगा? थिंक अबाउट इट, ये कैसे आएगा? क्या इन सब के लिए कोड लिखना पड़ेगा? सोचो, ये भी तो किसी ना किसी टैग में होंगे, और उन टैग्स पे कोई क्लास होगी, होगी कि नहीं? ये जो भी इंफॉर्मेशन नजर आती है, एवरीथिंग इज इनसाइड अ टैग। और वो टैग क्या इस टैग से अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए? अब ऐसे सोचो, क्या फ्लिपकार्ट ने अलग अलग टैग और अलग अलग क्लासेस लगाई होंगी? अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि एक पहला प्रोडक्ट तो आ गया, उसके लिए मैंने ये वाला टैग लगाया और ये वाली क्लास लगाई, तो आई गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट ने क्योंकि ऐसा किया था, तो क्या फ्लिपकार्ट ने बाकियों के लिए अलग अलग किया होगा? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं करेगा। फ्लिपकार्ट ऐसा क्यों करेगा? उसको भी तो स्मार्ट कोडिंग करनी है। फ्लिपकार्ट में जो लोग डेवलपर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसा करेंगे कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग कोड? कौन लिखेगा बैठ के? और ये तो डायनेमिक है। ये तो डायनेमिक है। ये इतनी वॉचेस आज है, कल नहीं है। तो कोड उतना जनरेट होना चाहिए खुद से जितने प्रोडक्ट्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट हियर? सी, आई एम सर्चिंग फॉर एप्पल स्मार्ट वॉच। मैंने स्मार्ट वॉच सर्च किया, तो फ्लिपकार्ट कहता है मेरे पास इतने रिजल्ट है। तो फ्लिपकार्ट ने इतने डिव बनाए होंगे। रन टाइम पर कोई कोड नहीं लिख रहा पीछे बैठ के, कोड एक बार लिखा होगा बस। पीछे से जितने रिजल्ट आए उतने डिव अपने आप जनरेट हो गए। एंड नाउ इफ आई सर्च समथिंग एल्स, अब मैं कोई ऐसी चीज सर्च करता हूं जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स, रिजल्ट कितने? 28। तो कितने डिव जनरेट हुए होंगे? 28। तो दीज आर 24, एंड ऑन सेकंड पेज देयर विल बी ओनली 4 मोर। बस देखो, खत्म। बाकी जनरेट नहीं हुए ना। इज दैट क्लियर? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, कि फ्लिपकार्ट भी तो ऐसी कोड करता होगा कि उसने बोला कि पीछे से जितने प्रोडक्ट आते हैं मेरे डेटाबेस से, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं लेकर आता हूँ, उतने जाकर मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ओके, फ्लिपकार्ट विल शो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द बैकएंड इन द डेटाबेस। सो द सेम थिंग आई विल बी डूइंग हियर, द एग्जैक्ट थिंग आई विल बी डूइंग हियर, कि जितने प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट लेकर आता है, इसका मतलब सब पर यही वाला डिव और ये वाली क्लास लगाता होगा ये। अगर हमें इस चीज का कंफर्मेशन लेना है तो ये लो, ये एप्पल का प्रोडक्ट है, ठीक है? ये दिस इज आईफोन 12, दिस इज नॉट स्मार्ट वॉच। मैं इसके इंस्पेक्ट में दिखाऊंगा ना आपको, यू विल सी द सेम टैग एंड द सेम क्लासेस विल बी देयर। ठीक है, क्लास का नाम पढ़ लो, 4RR01T। ओके, 4RR01T, देखा आप लोगों ने? तो इट मींस अगर मैं यूआरएल चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द यूआरएल, आई विल गेट द रिजल्ट। ये देखो, देखा आपने? कोई कोड नहीं बदला मैंने, मैंने सिर्फ यूआरएल बदला है। मैंने वो यूआरएल लिखा, आई एम गोइंग टू सिंपली राइट दैट यूआरएल ऑन विच इज एप्पल इज फ्लिपकार्ट इज शोइंग अनदर रिजल्ट। मैंने यूआरएल लिख दिया, मुझे मिल गया उसका प्राइस और जो भी कंटेंट है। समझ आया आप लोगों को ये? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। तो ये तो था कि एक प्रोडक्ट कैसे निकाला। दिस वाज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट सिंपली वन प्रोडक्ट। वी हैव टू रिट्रीव ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल। हमें तो सारे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? लेट्स सर्च फॉर स्मार्ट वॉच। तो जब हम स्मार्ट वॉच सर्च करते हैं, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? 24 ऑन वन पेज, नेक्स्ट 24 ऑन अनदर पेज, टोटल 3464 है। उसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो उतने पेजेस में फ्लिपकार्ट ने डेटा को डिवाइड किया हुआ है। सारा डेटा निकाल के ले आऊंगा मैं। विल बी एबल टू फिच ऑल द इंफॉर्मेशन। सारा डेटा चुरा के लेंगे फ्लिपकार्ट का, और हम उस पर अपना डेटा एनालिसिस करेंगे बैठकर। सो लेट्स डू वन थिंग, कॉपी दिस कोड एंड क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट। उसको पुराने वाले कोड को ऐसे ही छोड़ देते हैं आप, ठीक है? तो लेट्स मेक स्क्रैपिंग 2। ये स्क्रैपिंग का हमारा सेकंड वर्जन है जिसको हम बिल्ड करते हैं। इन दिस वर्जन वी आर गोइंग टू रिट्रीव लाइक ऑल दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन वन सिंगल पेज। एक पेज पर जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो सारे निकाल के ले आता हूँ मैं, सारे ये। ओके, कैसे निकालना है देखो। 24 है ना,
Let's do one thing. Find all. So we have another predefined method known as find all. हमारे पास एक predefined method है जिसका नाम है find all. That's it. अब फाइंड ऑल कर दो बस, लेकिन ये जो दो लाइन है ना ये नहीं चलेंगी। ठीक है, क्यों नहीं चलेंगी? बिकॉज दिस टाइम वी आर यूजिंग फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल विल रिटर्न यू अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। लास्ट जो स्क्रिप्ट थी उसमें एक रिजल्ट आया था, उसके पास डॉट टेक्स्ट होता है, बट दिस टाइम यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। अगर लिस्ट मिलेगी तो लिस्ट पे लगाना पड़ता है लूप। सो यू हैव टू यूज अ फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज, अब लूप कब तक चलाना है? टिल द लेंथ ऑफ टाइटल। देन प्रिंट title of I dot text, and then print price of I dot text. And here let's write, this is the product title, and this is the product price. Execute करते हैं। ये लो, do one thing, एक बीच में separator डाल देते हैं। Star into 40. Star into 40 means 40 times it is going to print star. See, we are getting all the products available on Flipkart on its Apple Watch page. उस पेज पर ये डेटा था, हम निकाल कर ले आए सारा। ओके, द ओनली चेंज इज फाइंड ऑल। फाइंड की जगह क्या लिख दिया है? फाइंड ऑल, कि वो सब निकाल के ले आओ जहां पर ये टैग और ये क्लास लगी है, तो सब पर ही ये टैग ये क्लास लगी है। एंड नाउ यू कैन सर्च एनीथिंग। आप यहां से क्वेरी चेंज कर दो। व्हाट डू यू वांट टू सर्च? टीवी, फ्रिज, एसी, बोलो क्या सर्च करना है? रिमेंबर ओनली वन थिंग, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पेस की जगह प्लस लिखना है। तो लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से पूछते हैं बताओ भाई व्हाट डू यू वांट। लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, सर्च प्रोडक्ट। Let's name it a product name. Okay, and product name को रिप्लेस करना है, जहां कहीं भी स्पेस आएगा ना उसकी जगह प्लस डाल देना। And instead of Apple smartwatch, I'm going to write here curly brackets product name. Starting में क्या आना चाहिए? F, because this is a F string. Let's execute. Now बताओ क्या सर्च करना है, क्या चाहिए आपको? What do you want? आप कुछ भी सर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। अब यहाँ से मुझे टीवी चाहिए, किसका? सैमसंग का। Let's search Samsung TV. ये लो, Samsung TV. Now can I make it a part of my chat application? क्या मैं इसको chat application का part बना सकता हूँ? बिल्कुल। Any time, any day, कभी भी आप इसको chat application का part बना सकते हो। Okay. Now execute again. Search something else कि मुझे, अच्छा एक बात का ध्यान रखना है कि you can only search electronic items. आप सिर्फ electronic item ढूंढ सकते हो। अगर आपने लिखा ना book या फिर शूज, जीन्स, ब्लेजर, ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट का यूआई चेंज हो जाता है। तो इफ यू विल सर्च कि मुझे बुक चाहिए, देखो यूआई बदल गया ना। सो इफ द यूआई इज डिफरेंट आई कैन नॉट गेट द डेटा। तो इसलिए वो डेटा मिल सकता है जिसका यूआई ऐसा दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। ओके, नाउ वी वाज ट्राइंग टू सर्च समथिंग एल्स कि आई वांट लैपटॉप ऑफ आसूस के लैपटॉप हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों ने सर्च किया। दिस इज द रिजल्ट। परफेक्ट। Okay, so please repeat the length, title, and range. Now, title contains a lot of things. So if you will see the what is length of title, see 24. What is the length of title? 24. Why 24? Because Flipkart says I show 24 products. Flipkart बोलता है कि मेरे एक पेज पे 24 प्रोडक्ट है। अब वो 24 प्रोडक्ट की ना एक लिस्ट मिल जाती है हमें।
So we get the list of products. That's why we execute a loop. हम लोग एक loop लगाते हैं 24 तक. Okay. अब suppose फ्लिपकार्ट एक पेज पे 24 रिजल्ट नहीं देता, 10 रिजल्ट देता है, तो दिस लूप विल एग्जीक्यूट ओनली टिल 10. ये लूप 10 तक काम करेगा. ओके. All right. Now, anything else? Any other question, query, anything? Yes, yes, we can get everything. Whatever details are there, we can fetch everything. जो भी यहाँ लिखा है ना, सब मिल जाएगा. सब कुछ. Discount, rating, features. Different UI part was कि like ये जो UI है ना, इसका HTML का कोड अलग है. ओके. जो इस तरीके से दिख रहा है, वन एक के नीचे एक प्रोडक्ट आता है. फ्लिपकार्ट यूजेस अनदर यूआई टू शो समथिंग एल्स, लाइक कि अगर आप शूज सर्च कर लेते हैं, इफ यू सर्च फॉर शूज, द यूआई इज डिफरेंट. ये देखो, ये बदल गया. यूआई मींस द अलाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यूजर इंटरफेस इज डिफरेंट नाउ. तो उनका एचटीएमएल भी अलग होगा. सो दैट्स व्हाई दिस स्क्रिप्ट विल नॉट वर्क फॉर शूज, बुक्स, जीन्स, क्लोथ्स. ऐसी चीजों के लिए काम नहीं करेगा जिनका यूआई ऐसे दिखता है. जिनका यूआई ऐसे दिखता है ना, उनके लिए काम करेगा. तो ऐसे काम कराना चाहते हो तो इफ एल्स लगा दो कि अगर इस वाली स्क्रिप्ट से डेटा ना आए तो इसमें ढूंढने चला जाए. सो यू कैन गेट द रेट ऑफ शूज एज वेल. ओके. I hope we are clear till here that how to simply search products, how to simply perform the web scraping. Now, any question, query, anything? For that, what we have to add in code. I told you na, if else. आप किसकी बात कर रहे हो यश? Which thing you are asking about? जो पहले पूछ रहे थे या अदर फीचर्स के लिए? अदर फीचर के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उनका इंस्पेक्ट में जाकर निकालना पड़ेगा ना. ओके, जस्ट टेल मी अबाउट लाइक व्हाट डू यू वांट. आपको और क्या रिट्रीव करना है, बोलो. रेटिंग एंड रिव्यू निकाल के ले आए, ये निकाल के ले आऊं मैं. सो द सेम थिंग यू हैव टू डू. राइट क्लिक, इंस्पेक्ट. इसका एक टैग होगा. अब इस पर कोई क्लास नहीं है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई टैग होगा, जैसे कि ये. और इस पर एक क्लास है, इसको निकाल देते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट, इज डॉट फाइंड ऑल स्पेन टैग. टैग का नाम स्पेन था एंड द नेम ऑफ क्लास वाज दिस. अब इसको चलाकर देख लेते हैं. And let's bring the reviews, ratings of I dot text. See, you can fetch any information. जो भी information वहां नजर आ रही है ना, सब कुछ आ जाएगा. Okay. Are you presenting your screen? There was some error earlier and I could not hear or see, but I think it's fine now, but I can't see your screen. So I think Vihan, you should try to reconnect. आप एक बार reconnect करो. Might be some internet issue from your side. Try to rejoin the meeting if you are not able to see the screen, or try to like change your Wi-Fi or internet something.
Okay, so I think we will continue now. All right. Now the next part we are going to integrate here is the another feature we can add. So we can do one thing. All right, let's proceed. So this is how we can fetch data from Flipkart. I'm going to show you one more example of any other website like imdb.com. Just to show you the flavor of two different websites, I am using IMDb. Okay, so let's search a movie. Okay, so if I'm going to search for any movie here, what I want is to fetch the data of any movie from the IMDb. मैं चाहता हूँ IMDb से किसी भी मूवी का डेटा आ जाए, किसी भी मूवी का. Only the URL will change. Okay, so this is the data of movie KGF. Okay, the steps are same, exactly same steps that we performed in Flipkart. जो step Flipkart में perform किए थे ना, वही step यहाँ perform करने हैं. Let's make script number 3. So the very first step is copy these two statements. Then you need path this till here. इतना कोड आपको सेम रखना है. You just need to change only one thing, that is the URL. आपको सिर्फ क्या बदलना है? URL change करना है. Let's copy the URL then. So this is the URL to get the data of a movie. Okay. Simple. बस खत्म. अब बताइए क्या निकालना है वहां से. Same steps you have to perform. मूवी का नेम इंस्पेक्ट में जाना है. So there is this h1 tag with this class. So I will write here page dot find h1 tag class paste. It will return you the title. We have to change the make request part too. No, you just have to change only one thing, that is URL. This thing only. That's it. Okay. You don't have to change anything else. You just have to change URL. The code will be same. Because earlier we was requesting Flipkart. Now I am requesting IMDb. The code will be same. Okay. All right. Now after this, we are going to do one thing. Let's print the movie title first. Okay. So it is forbidden. Earlier it was not forbidden. So I think IMDb is not giving the data now. Okay, so IMDb is not giving the data. So if it is showing this forbidden, then we cannot fetch data from IMDb. Actually, earlier it was giving the data. That's why I tried to show you the IMDb. So we can try with some other website. Okay, you can try with some other websites. All right. So, but let me give me your confirmation. Are we clear with this thing till here, everyone? Simply how to perform web scraping. Are we clear with all the steps, scripts that we did till here only?
Everyone, give me a confirmation quickly. If you have questions, you can ask, or just give me a confirmation that if you are clear. Yeah, we can try with that. Rotten tomatoes. I haven't tried with rotten tomatoes ever. Okay, it is working. You can fetch data from Rotten Tomatoes. Okay. So now we have the movie name. Then you can retrieve other details like this. So this is the paragraph that you have to retrieve. So you will simply write here info is equals to page dot find p tag and the class name is this. And then you can print info dot text. Okay. So is that clear, everyone? So this is how we got this data. You can retrieve other information, review of the movies and whatever you want if they are available here. Okay, so movie info is available, genres are available, languages are available, cast and crew is available. You can even download the images if you want. Okay, yeah, there could be any tag without a class. There could be. To retrieve the data, we have to find the parent of the particular tag. Suppose there is a tag like we did here, na? See, this is span tag. We wanted to fetch the reviews that there are 4,855 reviews are there. Okay, let me answer all the questions one by one. Okay, so guys, please wait. So the first answer I'm going to give to Yash that if you have a tag which do not have a class, so simply I want to fetch the rating and reviews, but these span tags do not have class. Okay, there is a class, but it contains only ampersand. So I will go to the parent here. I will go to this parent. This is span tag. So this parent contains all these small child. Okay, so I'm going to retrieve this span tag which contains this class. Okay, okay. So the another question was, please repeat from foreign range part. My internet got disconnected. Okay, uh, internet got disconnected. Okay, so basically we was using a for loop because this time we was getting multiple products from a web page.
This time we are not getting only one single product. This time we was getting the 24 products. So when you are retrieving 24 products, then you won't be receiving one single product. So definitely you're going to receive a list. In title variable, you have a list. You have a title list. You have a price list. Okay, ratings list. Everything is inside a list. Now, if I have a list, so how you will be able to retrieve the data from a list? Using a loop. You have to use a for loop. The for loop is executed till the length of title list or price list or rating list, because they all equally contain 24 items. So they all contains 24 items. Okay. So now title list contain 24 product title, price list contain 24 price, rating list contain 24 ratings. They all contain 24 number of what, why 24? Because it is available on Flipkart. So that's why we have to use a for loop. Okay, we cannot retrieve the information without using a loop, or you have to write one by one. This is why we are using for loop. Okay, is that clear to you now? Okay, so another question is from the data which we have retrieved from Flipkart, since we had copied the class of a particular product with its price, review, etc., will we get the result of the product of same price, or it can be all the 3000 plus product which Flipkart is ready to show? Okay, this question is from Anushka. Okay, Anushka, are you asking this question that we want to retrieve 3000 product and the code will be same? The classes will be same for all 3464 products. Is this your question? Yeah, the code will be same. The code will be exactly same. But now comes a point, then how will be able to retrieve the data of next 24 product, next 24, next 24, next 24? Because Flipkart gives you 24 products only on one single page. So that trick is, just go to page number 2. Let me show you the trick. Go to this page number 2. The URL is same. There is only one difference in the URL. At the end, you will see this. Can you see this thing, everyone? At the end, what is written here? And page equals to 2. So what if I write page equals to 6? It will redirect you page number 6. This is a simple trick to work with the pages. See, now you are on 6th page. Now, if I want to get on page 16, I can write any page number. I will be redirected to that page directly. Now tell me, how much data you want? For I in range, 10 pages. Okay, from 1 to 11. I will retrieve the data of 10 pages. Let's name it as page. So at the end, you have to write and page equals to curly bracket page. And in start, you have to write F. F is already written. Yeah, we already used I variable, so I'm not going to use that again. Okay, so that's why I have written for page in range. Now let me execute this. Fetching data of page. It could be 1, 2, 3 or anything. Now let's search Apple Smart Watch. Enter. See, on page number 3rd, might be reviews was not available of a particular product. This is why we got this error. Okay, this product might not be containing the reviews or rating something. Okay, so that's why we got this error. It might happen. Let me comment this for now, because every product will contain price and title.
So for the particular example, I'm commenting out this thing. Now search again Apple smartwatch. You can search anything now and it will start retrieving the data of different pages. Now you just have to mention the number of pages, how many pages you want to fetch. See how easy it is for you to retrieve the data of Flipkart. See, you just have to write one script and execute a loop and your job is done. Okay. So is that clear now, everyone? You just have to mention and page equals to, it could be page 1, page 2, page 3, page 4, it could be any page. Okay. It depends how many pages are there actually. Or anyone else, any other question, query, anything? If no questions are there, then we will continue. We can extract images in the same way. Yes, we can extract images in the same way. But if you want to download images, let me show you one strategy how to download images. Okay. So this is another interesting question actually, that how you can retrieve the images. Let's go to a website. I'm not going to retrieve the images of Flipkart. What will you do with the uh, with these images? They are no use for you. They're ये कोई आपके काम के तो है नहीं है ना. Let's go to a website, Marvels. मतलब काम के तो ये भी नहीं है, but just to show you little bit more interesting thing, let me show you how to retrieve images. Actually ये तरीका images चुराने का है जो अभी देखने वाले हैं. एक सही तरीका देखेंगे इसके बाद. After that I will show you how WhatsApp search images for you. आप आपको WhatsApp पे GIF सर्च करना आता है सब लोगों को आज की डेट में? आता है कि नहीं? व्हाट्सएप पर जीआईएफ सर्चेस करते हो आप, स्टिकर सर्च कर सकते हो आप, व्हाट्सएप पर जीआईएफ सर्च करते हो कि वट एवर जीआईएफ यू वांट टू सेंड फ्रेंड. वो जीआईएफ कहाँ से आ रही है? वो जीआईएफ व्हाट्सएप ने बनाई है? नहीं. वो जीआईएफ कौन बनाता है? देयर इज अ सर्विस. हम उसको यूज करेंगे आज. मैं आपको दिखाऊंगा, आप ना एंटर करना आपको किसकी जीआईएफ चाहिए, उसी की जीआईएफ निकाल के ले आऊंगा मैं. ओके. तो बट अभी पहले इमेज चुराना सीख रहे हैं, फिर सही तरीका सीखेंगे. सो सपोज मार्वल्स की वेबसाइट की सारी इमेजेस में निकालना चाहता हूँ. I want to retrieve all the images of Marvels. Okay, let's write a script. Import BS4, import urllib.request as URL, then path. आप इस स्क्रिप्ट को फिर किसी भी वेबसाइट के लिए यूज कर लेना. You can just change the path. Okay. URL open. Let me make HTTP request. Okay. Let me save it. Now what we need is a folder where I'm going to store all the images. मुझे एक folder चाहिए, directory चाहिए जिसमें हम images store करने वाले हैं. So for that, I am going to use os.mkdir. So it will create a directory known as images. Okay. Mkdir stands for make directory. So it is going to make one directory for you known as images. And in that folder, I want to save all my images. So first of all, let's write bs4.beautiful soup response
In return, I will get the page, and from the page, find all what? Find all image tags. Now you got all the images with you. आपके पास सारी images आ गई है. कितना चलाते हैं पहले? Execute till here only, so that I can show you how many images I have. Let's see the length of images variable. So I have 52 images. मेरे पास कितनी images हैं? 52. On this page, इसने सारी images निकाल के लेके आ गए. तो around 52 images are there. Okay. Okay. So if we have 52 images, then how we are going to retrieve them? How we are going to save those images in our machine? तो पहले अच्छा एक बात बताएं. अगर आपको किसी इमेज को डाउनलोड करना होता है, if you want to download one image, what you have to do? You have to right click, then save images. ऐसा करना पड़ता है ना? तो save images करता क्या actually? It basically get the address of the image. वो image का address निकालता है और आपको image मिल जाती है. यही होता है. So it means I want this URL of the image. मुझे image का URL चाहिए. Image का URL कहाँ मिलता है? HTML में कोई बताएगा? Image tag के अंदर image का URL कहाँ लिखते हैं? In HTML there is img tag. img tag के अंदर where you exactly put the URL of the image. Any answer? There is SRC, image SRC. If you have studied about it, अगर आपने image tag पढ़ा है तो image में SRC होता है. See, this is the SRC here. Okay, in this SRC, the URL of the image is available. Okay, this is what we want. यही हमें चाहिए. Okay, so what you have to do, images. पहले मैं दिखाता हूँ इमेज निकालनी कैसे हम लोगों ने. So I will write images square bracket 0. तो 0th इंडेक्स पर एक इमेज मिलती है. उसके अंदर से क्या निकाल के ले आओ? उसका SRC. So you will get the SRC of the image and we will download it. Okay, तो एक लूप लगाते हैं. For I in range, लूप कब तक चलाना है? Till the length of images. That will return you the SRs. And now, in order to download the image, we have to write URL retrieve. और URL retrieve के दो पैरामीटर होते हैं. First parameter is the SRC. Second parameter is the मुझे इमेज को सेव करके दे दो इस जगह पर. The name of the image will be इमेज का नाम क्या होगा? Image 01.png, image 1.png, image 2.png, image 3.png, like this. So we have a images folder that is empty right now. वो खाली है फिलहाल. Okay. Execute this script. Acha. Now images folder is already created. So when a particular folder is already created, we can use a if statement. तो हम ऐसा लिख सकते हैं if os dot path dot exist. क्या ये path पहले से exist करता है? क्या images पहले से exist करता है? It will either return true or false. तो अगर exist नहीं करता तो बनाना. I will use a if os dot path dot exist images. इसके पहले not लिख देते हैं कि अगर exist नहीं करता तो बना दो. ओके, सिंपल. तो हर बार नहीं बनाएगा, सिर्फ एक बार बनाएगा. जैसे स्क्रिप्ट चलाएंगे इट विल चेक वेदर इमेजेस फोल्डर इज देयर और नॉट. अगर इमेजेस फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो इट विल क्रिएट अ इमेजेस फोल्डर. लेट्स सी द आउटपुट. सी, इट हैज स्टार्टेड टू डाउनलोड द इमेजेस. Done. So this is how you can download the images of any URL. Just change the URL. अब आप क्या करो, किसी भी वेबसाइट की इमेजेस डाउनलोड करनी है, जस्ट चेंज द URL, बस और कुछ नहीं करना आपने.
ओके, इंटरेस्टिंग। देखो, इमेज डाउनलोड हो गई। सो यूआरएल रिट्रीव इज द मेथड विच वी यूज टू डाउनलोड द इमेजेस। तो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इमेज का यूआरएल या उस फाइल का यूआरएल जो डाउनलोड करनी है। यू कैन इवन डाउनलोड MP3 फाइल, आप ऑडियो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। So you just have to pass the SRC and then you have to mention where exactly you want to save and the name of the file that you want to put. ये दो चीजें हमें करनी होती है। Okay. So is it clear everyone? समझ आया सभी लोगों को ये? Everyone give me a confirmation quickly. Little bit. So if you have doubt in any of the part, please let me know. आपको किसी भी part में कोई doubt है किसी को तो बताएं। See, first of all, we have a lot of images on a page. हर पेज पर बहुत सारी images हैं। पेज से इमेज तभी डाउनलोड होती है जब हमें उसका एड्रेस मिलता है इमेज का। इमेज का एड्रेस उसके SRC में लिखा होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू आइटरेट ओवर द इमेजेस वेरिएबल और हर इमेज का SRC निकाल कर ले आए। बस उस SRC को यहाँ पर लिख देना है। SRC इज द यूआरएल ऑफ द इमेज। उस इमेज का जो यूआरएल है वो SRC में लिखा होता है। सो दिस इज हाउ वी डाउनलोड द इमेजेस। Anyone, any question, query, anything? So if we are clear till here, then we will proceed after this. इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। So now this was the web scraping. ये सब था जो आप web scraping में कर सकते थे। Okay. You can even integrate all these features in chat application. ये सभी features आपको अपने chat application के अंदर integrate करने हैं। Okay, you have to integrate all these features in your chat application. So if I ask that search product, अगर मैं search product जैसा कुछ लिखता हूँ तो it will ask me what do you want to search. और जैसे ही मैं search करके लेकर आऊँ, it will print all the results from Flipkart. So this is the part that you all have to integrate in your homework. आपको अपने homework में ये काम करना होगा. Okay. And one more thing, you can even integrate one more interesting part in your particular application. What if our chat application starts to speak? Think about it. What if our chat application starts to speak as well? अभी वर्बल कम्युनिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, वो बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं, मतलब आई कैन बिल्ड दैट बिकॉज मेरे पास उसका कोड भी है, मैं उस पर काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर देखो स्पीच हमें ऐसा करना है कि लाइक मैं कुछ बोलूं हाय हेलो, मैं बोलूं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग हाय हेलो, तो वो कोड लिखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो सबके सिस्टम में चलता भी नहीं है। बट हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि वट एवर आई एम आस्किंग इन टेक्स्ट फॉर्म, इट शुड स्पीक आउट। ये उसको बोलना शुरू कर दे कि मैंने क्या पूछा और इसने क्या आंसर दिया। थिंक अबाउट इट, क्या ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेट मी इंटीग्रेट दिस फीचर इन योर एप्लीकेशन। मैं इस चैट एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर इंटीग्रेट करने वाला हूँ। फीचर ऑफ वॉइस, इसको वॉइस दे देते हैं। ओके, so let's create a new script. In that script I'm going to enable the voice feature. So whatever answer will be there, it is going to speak out for you. ये अब आपको हर एक आंसर को बोलकर बताने वाला है। So how it is going to speak? Let's see. So the very first thing is we need few packages. सबसे पहले हमें कुछ packages की जरूरत है। Let's install them. We need pip install gtts. We need py tsx3 and we need play sound. So in order to play sound, we need three packages. मैं ये command copy करके आपको share कर दूंगा. I will share this command with you all, even though I am sharing it in your chat window as well.
Okay. Now we have to execute this command. इस command को execute करते हैं. It is going to download and install these packages. ये इन packages को download install कर देता है net से लाकर. So all these packages are required to play sound. Okay. Now after that, let's talk about the code part. What exactly we have to integrate in the code. Let's import a package gtts and from play sound import play sound. These are the two packages that we need. हमें इन दो packages की जरूरत है to play the sound. Okay. So which sound I want to play? I want to play the message that is being displayed by you कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या पूछा, and what is the answer by CPU. दो चीजें मुझे प्ले करानी है. So how we are going to do that? तो जैसे ही आप कोई मैसेज लिखोगे ना, I will say TTS is equals to GTTS dot GTTS. In this box, I'm going to write message. So this message variable contains whatever your message was, and it is going to speak out that thing. ये उस चीज को बोलने वाला है. Okay. तो पहले सिर्फ इसको चलाकर देखते हैं, सिर्फ इतना पार्ट. एंड वन मोर थिंग, इसको पहले आपको सेव करना पड़ेगा. TTS डॉट सेव sound dot mp3. So it will create a dot mp3 फाइल. ये जाकर एक mp3 फाइल बनाकर आ जाएगा. एंड देन आई विल एंटर play sound dot mp3. लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट फर्स्ट. पहले इसको चलाकर देखते हैं क्या होता है. No module GTTS is not reviewed. Did you mean GTTS? Exactly. तो ये कैपिटल एस होना चाहिए था. You said hello day. Let's try something else. Permission denied. Okay. So what we can do, the specified device is not open or is not recognized by failed to close. Okay, so it is failed to close sound.mp3. Okay. So what we can do then, because by default it might create a sound.mp3 here. Yes. Okay, so let's do one thing then. At the end of this, we have already imported os dot rm move sound.mp3. At the end, I'm going to delete sound.mp3. It will recreate the sound.mp3 file. Okay. You said hello day. Let me check if the file is deleted. Yes. Now let's try again. The device name is already being used as an alias for this application. If is in- Okay, then we will do one thing. We have to store the messages. So in order to play the messages, we have to store them. हमें क्या करना पड़ेगा? This is the only problem here. Message.
Let's try now. You said hello there. Let me try one more thing. You said tell me date. You said tell me time. So basically, there is only one problem that it is not able to close the file. That's why it is again and again giving me this particular error. That's what I am checking for. इसी के लिए मैं देख रहा हूँ बस कि अगर ये इसको delete कर दे तो हमारे लिए better हो जाता है. Actually, it is not even able to play this. Just a second, let me check. एक दो चीजें और देख लेता हूँ मैं इसमें और फिर मैं एक बार आपको अपडेट करता हूँ कि क्या कर सकते हैं इसके लिए. You said hello. I have to actually just update a package. Just a minute, let me update this one. Because in the previous package, this particular function gives the error. एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं बस.
You said tell me date. You said tell me time. Okay, so now it is working perfectly. So whatever message I'm going to enter, it is always going to repeat that. You said hello. Are you able to hear the answers? ये आप सुन पा रहे हैं क्या ये exactly जो भी मतलब जो bot है जो बोलता है? So now see we have integrated this thing in our application. ये हम लोगों ने integrate किया है. And using this like we can perform a lot of thing. अब जैसे हम लोगों ने ये जो बोलना शुरू किया इसके लिए हम लोग इसके जो रिप्लाई हैं उनको भी सेट कर सकते हैं. इतना So I hope that is clear to you. Everyone, is it clear? क्या किया हम लोगों ने? We have installed a play sound package, GTTS package. ये दो packages को हम लोगों ने install किया है. After installing these two packages, we have simply added this code. So first it is going to speak out whatever you are going to say. Then it actually saves the file first, then it play the sound. And then we are removing that file as well because I want to keep all the files in my machine. Okay, so this is the code till here that we have used to play the sound. So now we are completed till the web scraping part and how to play the sound using Python. Any question, query, doubts, anything you want to ask? Everyone, are we clear till here? No question, no queries? Because I'm going to share all these scripts with you so that you can even try in your machines. WhatsApp GF thing, yeah, we'll be talking about it in the API part. After this, we'll be starting the API section. Okay, don't worry, we are going to learn that as well. Okay, so let's take a break first. Let's take a break of 10 minutes and after that, I'll start with the API calls. Okay.
All right, everyone, let's get back. Continue करते हैं वापस. Okay, now we are going to talk about the next part here, that is the API calls. After that, we are going to start with the API calls. So, shall we start, everyone? Everyone, please give me confirmation. Are you there? Shall we start so that I can continue? All right. So now we are going to talk about one more interesting as well as one of the most useful part of development, that is API calls. API calls is one of the most important part of any development. It could be web development, software development, game development, data science, data analysis, whatever you are doing. API calls are one of the most important part. Let me tell you why. See, when we talk about web scraping is not a legal way to retrieve the data from any website. That's like you are stealing data from the website. आप डेटा चुरा रहे हो, आप पूछ नहीं रहे फ्लिपकार्ट से कि क्या मैं आपका डेटा ले सकता हूँ. यू आर नॉट ऑथराइज्ड. वो तो फ्लिपकार्ट है जिसने डेटा दे दिया है. ठीक है. नौकरी.com तो नहीं दे रहा है ना डेटा. जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कोई भी नहीं देगा. They are not going to give you the data at all. So they all have made their services. इन सभी ने क्या किया हुआ है, अपनी सर्विसेज बनाई हुई है. So they ask you to hit their service in order to retrieve the data. आप किसी भी वेबसाइट का डेटा लेके आ सकते हो. फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जीमेल, वट एवर सर्विस यू सी इन टूडेज टाइम. आप कोई भी सर्विस आज की डेट में देखते हो ना, सबका डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर सही तरीके से जाकर मिलता है. Let's say I want to integrate Twitter in my particular application, whatever my application is. I want to integrate tweets. मुझे tweets integrate करने हैं. So you simply search for Twitter developer. You will see a website for Twitter developer. So this is Twitter for developers. So Twitter developer is a platform where you can hit the APIs. So you can like retrieve the tweets, whatever you want. Okay. I was simply giving you one basic introduction of API calls, that why we need them. Okay. I haven't told anything that is related specifically about API calls. I'm going to repeat all the things. Okay. So whenever we are talking about API calls, then do the same thing for Facebook. Let's search for Facebook developer. Whatever website you use, Facebook, Twitter, or anything, just write developer word in front of it. आप कोई भी website use कर रहे हैं ना, उसके सामने से developer लिख दो, that's it. This time I have written Facebook developer, and now you can see Facebook is there, provide you the services of Messenger, Facebook login, Instagram, WhatsApp, whatever service you want from the Facebook. So what exactly these things are? All these things are services. And to retrieve all these services, the concept is known as API calls. Now, what is API? API stands for Application Programming Interface. So that's an interface which provides you data. So how it works, let's see. Now, suppose if we talk about WhatsApp, let's talk about WhatsApp. In WhatsApp, this is the area where you see a lot of stickers and all in this area. Okay. This is the section where we see messages in WhatsApp. Okay, I'm specifically talking about the WhatsApp example. So here we see the stickers or GIF. Now, can you tell me how exactly you retrieve the stickers on WhatsApp? आप लोग WhatsApp पे स्टिकर कैसे लगाते हो? WhatsApp पे स्टिकर कहाँ से आते हैं? जब हमने WhatsApp इंस्टॉल किया होता है ना, तब स्टिकर्स नहीं होते उसमें. फिर स्टिकर कहाँ से आए? Anyone?
आप में से कोई भी स्टिकर्स अगर यूज करता है तो व्हाट्सएप पे स्टिकर कहाँ से आते हैं? अरे इमोशन वाले सेक्शंस में नहीं आते, कहाँ से है, वहां आए कैसे? व्हाट्सएप, जब देखो, व्हेन यू इंस्टॉल व्हाट्सएप, आपको इमोटिकॉन्स मिलते, इमोजीज मिलती है बाय डिफॉल्ट, आपको स्टिकर्स नहीं मिलते। देन हाउ यू गेट दी स्टिकर्स? स्टिकर कहाँ से आते हैं फिर वो? गेटिंग माय क्वेश्चन और नॉट? जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट स्टिकर्स वगैरह कुछ नहीं आते, बस इमोटिकॉन्स आते हैं, इमोजीज आती है। नहीं, अपडेट की बात कर रहे हो? देर आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस रखते हो अपनी मशीन में। बहुत सारे लोग ऐसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन आती है स्टिकरली। आई डोंट नो इफ यू हैव ट्राइड दिस एप्लीकेशन और नॉट। सो देर आर फ्यू डिफरेंट मोबाइल एप्स अवेलेबल। तो बहुत सारी मोबाइल ऐप आती है लाइक स्टिकरली एंड ऑल। यूजिंग these application, you can put these stickers in your WhatsApp. Getting my point? Third party app, exactly. We generally use third party application. So by default, WhatsApp is not going to provide you the stickers and all. So there are third party applications. Okay. So these third party applications are not built by WhatsApp. ये जो third party application है, इसको WhatsApp ने नहीं बनाया ना. So this is some other application, third party application. So how they are talking to each other? Like how come the sticker that is available here is displayed here? कोई स्टिकर अगर स्टिकरली बनाता है तो वो यहाँ कैसे दिख रहा है? They two are both different applications. They both are running on different servers. सब कुछ अलग है. फिर how they are integrating? Similar thing, same thing happens for GIF images. जब आप GIF सर्च करते हो, have you ever seen this term? Not. देखा है कभी ये? और गिफी, have you ever seen any of them? टेनोर या गिफी जैसा कुछ देखा है कि नहीं लिखा हुआ कभी? बताइए भाई, नहीं देखा किसी ने? देखा है? देखा है ना काफी लोगों ने? टेनोर, गिफी, ये सब क्या है? What exactly this tenor or Giphy is? Let me show you. Search for tenor GIF API. So this is API service जो आपको GIF images provide करती है. वो Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn सब इसको यूज करते हैं. So this simply uses this particular service in order to retrieve the images. Similarly, there is Giphy. ऐसे ही क्या होती है Giphy API. Giphy is one of the popular one. टेनोर गिफी ये बहुत पॉपुलर है, जिनकी एपीआई सर्विसेज सभी एप्लीकेशंस यूज करते हैं टू गेट दी एपीआई, टू गेट दी जीआईएफ इमेजेस. ओके, विल बी राइटिंग अ पाइथन कोड टुडे फॉर दिस. इसके लिए हम एक पाइथन का कोड लिखेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल एपीआई कॉल. एक सिंपल पाइथन से एपीआई कॉल कैसे लगाई जाती है, पहले वो सीखते हैं. तो ऐसा करने के लिए विल बी fetching the data of will be fetching the data of weather. So there is a weather API. Using weather API, you can retrieve the live weather report of a particular state, city, country, anywhere. So this is one of the API, one of the popular API that we have that we can use to retrieve the weather, live weather data. So there are a lot of services. Everything is being installed using some API. हर चीज का डेटा अवेलेबल है API की फॉर्म में. तो आपको सिर्फ सर्च करना है, वो वर्ड लिखो, उसके आगे API लिख दो, उसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको. एंड नाउ यू जस्ट हैव टू साइन इन टू दैट वेबसाइट इन ऑर्डर टू गेट द डेटा, बिकॉज दिस इज द लीगल वे टू गेट द डेटा. पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा वो. It is going to authenticate you that whether you are not a robot or something. So you have to sign in to this particular website, and after sign in you can retrieve the data. Okay, after sign in you have to go my API key section. आप अपने यूजर नेम पर जाओगे,
कोई भी एपीआई कॉल करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिट्रीव दिस एपीआई की. आपको ये एपीआई की जरूरत पड़ती है. My API keys. So it will generate one unique API key for you. This is the key. ये वो की है जो ये जनरेट करते हैं. Okay. After generating this key, now I want data. तो मैं API पर जाता हूँ and I will search for data. What exactly I want? I want current weather data. मुझे current weather का data चाहिए. Let's go to API doc. Now it says कि if you want the data of current weather, आप ये URL एक्सेस कर सकते हो. In this URL, you have to pass the latitude and longitude and your API key. You have to pass three parameters: latitude, longitude, and API key. And then, if you copy this, इस URL को copy करते हैं, paste करते हैं. अभी enter करेंगे तो कुछ नहीं होगा. So you need to replace this API key with the API key. तो API key पर चलते हैं अपनी. This is my key here. Replace it. एक्चुअली पहले ऐसा करते हैं हम लोग. लेट मी शो इट टू यू ऑन नोटपैड. दिस वाज द यूआरएल. अब यहाँ पर आपको लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डालना है जिसकी भी आप कोऑर्डिनेट जिसके भी निकालना चाहते हो. लेट अस सर्च फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिल्ली. आई विल सिंपली सर्च दिल्ली latitude and longitude. Okay, so that is 28.7041. Replace it. And longitude, copy this, replace it. So this is the URL that we will copy and execute. Now, this is the data of Delhi. Let's see. This is the data of Delhi Pitampura. See? So by default, Delhi is picking up the data from Pitampura, whatever the location it is there. You can play around with the latitude and longitude value. So this is the data that is provided to you in form of JSON. This data is in provided with you with the format known as JSON, but in Python it look like a dictionary. In Python, it looks like a dictionary. By default, every website will provide you data in form of JSON, but in Python, it will be converted into dictionary. Let's see. So let's talk about it. That we have import URL lib dot request as URL. Then you have to import JSON package because the data format I am going to receive is JSON. 90% of the time you will get JSON. Now, what is JSON? JSON stands for JavaScript object notation, which will be converted into Python dictionary at the end. Okay. So you have to open the URL first. Let me put the path here. This is the path that I want to hit. So URL open path. In return, you will get the response. The same thing we did in the web scraping part. But now we don't have any beautiful soup or something. We have JSON. So JSON says that I have a method known as load. You need to pass the response here. In return, what you will get? The data. That's it. This is the dictionary in Python. Okay, so you will receive a dictionary in Python. Now, what exactly the information you want? Let us first put it in a variable known as data. Okay, so we have to execute again and then data. All right. Now, data has keys. Data has keys. Now, what exactly I want? I want main. So I will write data square bracket main, because main contains the main data of temperature. So now it returns you the temperature in Kelvin. It returns temperature in Kelvin. So we can convert it into Celsius or Fahrenheit, depends. So I will write quotes and temp, because whenever dictionary is there, you always have to use a square bracket. In a square bracket, you have to write a key. So main is a key, temp is a key, feels like, temp min, temp max. These all are the keys available. Okay, all these are the keys available. Now, finally, after retrieving all these keys, we can do one thing. Let's do one thing here.
Okay, so we just need one thing. We just need to implement this script in Python to understand how API call is working. So you just need to copy these two things, actually these three things. Then you need this code here, data. Then we need to print this thing. This is going to return you the temperature. Simple. Let me execute this script just to test if it is working. Response is not defined. Okay, we forgot to enter one line, the response one. Okay, now let's execute. That's it. You are getting the temperature of Delhi. Okay, we are getting the temperature of Delhi here. So is it clear to you, everyone, how to retrieve the data simply? Now, what if we want to fetch the data of some other city, some other state? Then do we have to like write latitude and longitude every time like this? First search latitude and longitude on Google, then replace here. So instead of doing this, we will use a package, a library known as GeoPy. I will use a library known as GeoPy. First, you have to install this library. By default, it's not available. So you have to install GeoPy. Okay, so in my case, it is already installed. So GeoPy is the library that we need. After that, let's import GeoPy. And then we will do one thing here. From GeoPy dot geocoders, we have to import a package known as no me Maitreyi. So this is the package that we need. I'll simply show you here on ideally first. Okay, so we are going to import this package. This will help you to simply get the latitude, longitude of any location wherever you want. So let's first create the object of it. User agent, any application. So I have written app1 that returns you geolocator object. And now inside this geolocator, you can write geocode. Now, what do you want? Like you, of which city of which country you want the coordinates of? आपको किसके coordinate चाहिए वो इसमें जाकर लिख दो. I want coordinates of Mumbai. See, you are getting the coordinates of Mumbai. Okay, let's do one thing. Let's take a variable chords. And now in chords, you will get the latitude and longitude. Simple. Now it becomes dynamic. You can take input from user. अब हम user से input लेंगे कि enter the name of state, enter the name of city. आप बताओ किसका डेटा आपको चाहिए. जिस किसी का भी डेटा आपको चाहिए होगा ना, just find the latitude and longitude of that city or country that user is asking for. Let me replace the code. Let's take input from the user. Input, enter city, state, country, whatever you want. Okay, so let's name it as location. And now put it here. इस location को यहाँ पर डाल देते हैं. In return, what you will get coordinates. Now I want latitude. अब मुझे latitude चाहिए तो I will write this. Longitude चाहिए तो I will write this. And यहाँ जाकर इसको हटा देते हैं. Curly brackets, let curly brackets LON. And starting में क्या लिखकर आना था? F. That's it. अब बताइए आपको किस जगह के आप वेदर रिपोर्ट देखना चाहते हो लाइव. Let's search for Mumbai.
301. सो बेसिकली इट इज इन केल्विन, तो केल्विन में इस्तांबुल ओके तो ये बेसिकली केल्विन में है. यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी फ़ारेनहाइट. में ख्याल से फॉर्मूला होता है -271 समथिंग करके, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है ना, -271 करते हैं केल्विन टू सेल्सियस, -273. ओके, तो वट एवर दी केल्विन इज, उसमें से आपको 273.15 घटा देना है. तो राइट नाउ वी हैव डेटा इन केल्विन, मेन स्क्वायर ब्रैकेट टेम पेस्ट इट. तो 0 K की जगह जो भी आपके पास केल्विन की वैल्यू है उसमें से ये घटा देना है. आई गेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस. लेट्स प्रिंट दिस. अब इसको प्रिंट करते हैं. फाइनली इट इज डन. ओके, तो ऐसा लिखते हैं, टेम्परेचर इन करली ब्रैकेट इज करली ब्रैकेट. यहाँ पर F लिख देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं लोकेशन. लेट्स सी नाउ, इनवैलिड कैरेक्टर K माइनस. Okay, so enter city or country. So we have written Mumbai. So the temperature is this. इतना बड़ा एक टेम्परेचर शब्द जाता है, देख रहे हो आप. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. अब इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए एंड तक कन्वर्जन करने के बाद, मुझे डेसिमल वैल्यूज को कम करना है. सो देर इज वन सिंपल फॉर्मूला. फॉर्मूला नहीं, एक पाइथन का सिंटेक्स है, colon.2f. colon.2f मीन्स टिल 2 डेसिमल पॉइंट्स ओनली. डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक दिखाना बस. ओके, search again, Mumbai. So the temperature is 28.03. Search again, something else. सेम आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है. देहरादून. Let me again search. Is it again? Okay, something is invalid then. कुछ तो गड़बड़ है अगर सबका टेम्परेचर सेम आ रहा है तो. Let's see the data variable. After division, latitude, longitude, let log. Okay. Here it is written Mumbai. So every time it is fetching the data of Mumbai, I have to replace it with the location. This was the issue. Now it will work. Let's see. Dehradun. Okay, 10 degree. Delhi, 16 degree. Clear? Everyone? समझ आया सब लोगों को ये how it is actually working? अब बताओ, किसी का भी टेम्परेचर ढूंढना है, लाइव ढूंढो. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना था, उसके बाद हमने एपीआई कॉल किया टू रिट्रीव दी लाइव करंट वेदर डेटा. करंट वेदर डेटा फेच करने के लिए वी हैव टू यूज दिस. उसके लिए हमें ये यूज करना. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. अगर आपको क्लियर है तो गुड, नहीं है तो क्वेश्चंस पूछो. सी दिस इज नॉट लॉजिकल. अब इन चीजों को अगर आप देखेंगे ना, इट्स नॉट लॉजिकल. यू डोंट हैव टू पुट द लॉजिक. इट्स ऑल प्री डिफाइंड. ज्यादातर चीजें यहाँ पर प्री डिफाइन है कि जियोपाई नाम का पैकेज है, वी हैव टू यूज दैट पैकेज एज इट इज. उसके अंदर एक ये नॉमिनेटम एक क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बनते हैं, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन का नाम कुछ भी लिख सकते हो. देन यू आर आस्किंग अ यूजर कि यूजर से आपने पूछा कि किसका आपको डेटा चाहिए. देन जियो लोकेटर के पास जियो कोड नाम का प्रीडिफाइंड मेथड है. यू जस्ट नीड टू पास योर लोकेशन. वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल कर दे देता है. देन उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम अपने पाथ में पास करते हैं, जो कि हमें कहां से मिला, ओपन वेदर से मिला था. फिर उसके अंदर हम लोग अपना रिस्पॉन्स रिट्रीव करते हैं, जेसन पास करते हैं, टेम्परेचर मिलता है, वी कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड प्रिंट इट. दिस इज द होल स्ट्रेटेजी टू गेट दिस एपीआई कॉल. एपीआई कॉल लगाने का ये हमारा तरीका. एम आई क्लियर?
समझ आया आप सब लोगों को ये? बताइए भाई, एवरीवन गिव मी अ कंफर्मेशन, आर वी क्लियर? समझ आया? See, these are the kind of examples that you don't learn on daily basis. आप डेली ऐसी बातें नहीं सीखते हो, तो इसलिए यू हैव टू लाइक सिट हियर फॉर योर विद योर 100% कंसंट्रेशन। आप 100% फोकस के साथ यहाँ पर बैठो एंड यू आई सेट ऑन द डे वन। मैंने आपको डे वन ही बात बोली थी कि डे वन से लेकर डे 10 तक जो 100% बैठेगा ना, इतना कुछ सीख के जाएगा, इतना कुछ सीख के जाएगा कि लाइक यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू वर्क विद। आपके पास इतना कुछ होगा दिमाग में, इतनी बातें जानते हो गया। सोचो अभी आप 3 दिन में ही अपना डिफरेंस देखना शुरू करो, डे वन और डे 3 में डिफरेंस निकालो। डे वन में आपको नहीं पता थी ये सारी बातें भी होती हैं। नाउ ऑन डे 3 यू नो अ लॉट ऑफ थिंग। वेब स्क्रैपिंग होता है, इंटरनेट से ऐसे डेटा निकाला जाता है, या पैकेजेस होते हैं, या इस तरीके से चीजें की जाती है। तो सोचो डे 10 तक क्या होगा, डे 8 जो भी हमारा डे लास्ट होगा, डे तो क्या होगा तब तक, तो क्या क्या सीख चुके होगे आप। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि देखते रहो, बस करते रहो, ठीक है? अनस्टॉपेबल, बी अनस्टॉपेबल, कि बस एक मोड में आके बैठ जाओ और कोड करते जाओ, देखते जाओ और क्वेश्चंस पूछते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोड करते जा रहा हूँ और आप बस हाँ हाँ कर रहे हो, ओके 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 ओके, ऐसा नहीं होना। यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, द डाउट्स। आप लोगों ने लगातार पूछते रहना, सर ये क्या किया, सर ये क्यों किया, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई नॉट दिस। हर चीज आपने पूछनी है। ओके, आई एम अनेबल टू इंस्टॉल द पैकेज, इट सेज पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ओके, अगर किसी का ये इशू आता है कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये बहुत सारे लोगों का इशू आएगा जब आप ये कमांड रन करोगे। तो द रीजन इज कि पाइथन इज नॉट सेट इन योर एनवायरमेंट वेरिएबल। आपका जो पाइथन का पाथ है ना, जहां पे आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, उसका पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ओपन द न्यू आइडियली, एक आइडियली ओपन करो नया एकदम, ठीक है? यहां जाकर लिख प्रेस करो कंट्रोल एस, इसको सेव करने की कोशिश करो, कंट्रोल एस, ठीक है? इट विल रिटर्न यू दिस पाथ, ये आपको पाइथन बता देगा पाइथन कहां है। कॉपी दिस पाथ, इस पाथ को कॉपी करना है, क्लोज इट। एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करो, अब सर्च फॉर द एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ, यहां से आपको मिलेगा पाथ, डबल क्लिक करो और जस्ट लुक एट दिस। आप एक बार जरा ध्यान से देखो, मैंने पाइथन का देखो पाथ कैसे सेट किया हुआ है। सेम थिंग यू हैव टू डू। आपको भी एग्जैक्टली सेम करना है। सी पाइथन स्क्रिप्ट्स, ओके, दिस इज नीडेड। आपका पाइथन का पाथ यहाँ पे ऐसे सेट होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट फोल्डर तक और एक पाइथन फोल्डर तक। इट इज मेंटेड, अगर ये सेट होगा तभी आपकी पिप कमांड रिकॉग्नाइज होगी, वरना नहीं होगी। ओके, क्लियर? उसके बाद एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, फिर पुराने वाले को बंद करके एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उसमें ट्राई करना, ठीक है? और ये जो सेशन है रिकॉर्ड हो जाता है, तो इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, और रिकॉर्डिंग देख के फिर ट्राई करना। जो मैंने अभी बोला है सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, तो इन दैट रिकॉर्डिंग जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अवर फाइनल पार्ट, हाउ टू रिट्रीव द जीआईएफ इमेजेस। अब वो जीआईएफ इमेज निकालने वाला काम करते हैं। तो जीआईएफ इमेजेस निकालने के लिए लेट्स गो टू गिफी। गिफी के पास चलते हैं। So Giphy will return a lot of GIF images. So first part here is to log in again. आपको यहाँ पे भी log in करना पड़ता है। I already have my account here. उसके बाद आप इस पे डैशबोर्ड में जाते हो। लॉग इन करने के बाद you have to go inside the dashboard. लॉग इन अगर आता है तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको if you are not logged in, तो आपको लॉग इन करना जरूरी है, ठीक है? तो देखो इसने मुझे खुद ही लॉग इन कर दिया है। So after login, again it will give you API key. See, this is the authentication I was talking about. मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये एक प्रॉपर तरीका है डेटा लेकर आने का। तो आपको एक यूनिक एपीआई की जनरेट करके देता है कि कहता है इस की के थ्रू ही आपको डेटा मिल सकता है। अगर आप ये की खो दोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, दूसरी की जनरेट करो। अब गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई इट इज मस्ट हैव कि अगर मैं किसी भी एपीआई के थ्रू डेटा लेके आना चाहता हूँ,
have to learn to get data through the API keys कि पहले API की जनरेट होगी, वो की हमें अपने URL में लिखनी होगी. So let's go to dashboard now. Then let's go to the API Explorer में चलते हैं एक बार. यहाँ पर भी नहीं. Let's go to then. Yeah, it is free of cost for few examples. मतलब मैं जो भी जितना हमें चाहिए उतने के लिए फ्री है. ठीक है, don't worry about it. Okay, so we need a Python script. See, एक पहले से बनी बनाई Python script मिलती है. तो इसको कॉपी कर तो सकते हैं, बट इट विल बी बेटर कि मैं अगर ऐसे कॉपी ना करूं. आई विल कॉपी दिस पार्ट ओनली. मैं पूरा कॉपी करूंगा तो समझ नहीं आएगा अभी. सो आई एम गोइंग टू कॉपी टिल हियर. पहले ये हो गया जेनरिक यूआरएल. ओके, देन वी नीड टू पास 3 पैरामीटर्स. उसके बाद ये 3 पैरामीटर पास करने के लिए बोलता है क्यू, एपीआई की एंड देन दिस. तो इसको कॉपी करते हैं. देन कॉपी दिस. नाउ इट विल जनरेट अ न्यू यूआरएल. दिस इज द फाइनल पाथ. मैं अभी इसको दिखाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. वेट फॉर इट. GIF API के नाम से इसको बनाते हैं. लेट मी प्रिंट पाथ फॉर यू फर्स्ट. पहले मैं आपको पाथ दिखा दूं कि पाथ क्या बनेगा इसको चलाने के बाद. सी, दिस इज द पाथ. तो उसने क्या किया, थोड़ा आपके लिए इजी करने के लिए इट सेट की देखो पाथ बहुत बड़ा बनता है ना, तो पाथ को थोड़ा शॉर्ट कर करके बनाते हैं. पहले एक जेनरिक पाथ 1. इसके बाद क्या सर्च करना है बोलो. तो इट इज गोइंग टू सर्च दी GIF इमेजेस ऑफ रेयान गॉसलिंग. मुझे रेयान गॉसलिंग की नहीं करनी, मुझे किसकी सर्च करनी है, टॉम एंड जेरी. तो वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च जस्ट राइट हियर. दिस इज द. उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, योर एपीआई की. एपीआई की कहाँ मिलेगी, अभी दिखाया था ना. डैशबोर्ड पर जाओ. here you will see the API key. this is the API key here. let's copy. इसको कॉपी करते हैं and then paste it here. limit 5. how many images you want. आपको टॉम एंड जेरी की कितनी इमेजेस चाहिए. I want 20 images. that's it. इतना कोड हमारे लिए मस्ट हैव है. now the path is created. अभी क्या बन गया है, पाथ तैयार हो गया है. नाउ वी हैव दी पाथ अवेलेबल कि इस जगह से डेटा लेकर आना है. सो लेट्स सेट यूआरएल डॉट यूआरएल ओपन पाथ. इन रिटर्न आई विल गेट द रिस्पांस. और उस रिस्पांस को किसको देना है, जेसन. जेसन क्या करेगा, उसका उसमें से आपको डेटा निकाल कर देगा. पहले इसको चलाते हैं. लेट्स सी. यूआरएल. ओके ओके, डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, रिक्वेस्ट. do one thing then. request.url open. ओके, थोड़ा सा वो चेंज है, ज्यादा फर्क नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेटा. डेटा में देखो क्या आया. डेटा में ना बहुत सारी चीजें आती है. सी, डेटा में बहुत सारे यूआरएल्स आते हैं क्योंकि आपने 20 इमेजेस का डेटा मांगा ना. सो दिस इज द डेटा ऑफ 20 इमेजेस. तो हम 20 इमेजेस का डेटा नहीं मांगते. लेट्स आस्क फॉर 2 इमेजेस. पहले 2 इमेजेस का लेकर आते हैं क्योंकि हैंग हो गया है. देख रहे हो बहुत स्लो चलना शुरू हो जाता है, हैंग हो जाता है जब इतना सारा डेटा आता है और वो प्रिंट हो जाता है ना पीछे. लेट मी क्लोज ऑल ऑफ देम. एक बार इन सबको क्लोज कर देते हैं वरना स्लो हो जाएगा. ओके, तो अभी 2 इमेजेस का डेटा लेकर आया हूं मैं बस. सो दिस इज द डेटा. ये डेटा आ गया 2 इमेजेस का. अब इतना सारा डेटा क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग साइज की इमेजेस रिटर्न करता है. छोटे इमेज, छोटे साइज, बड़ा साइज. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइज अवेलेबल हियर. तो अब हमें डेटा के अंदर डेटा मिलता है. उसके अंदर आप लोगों को यूआरएल चाहिए होंगे इमेजेस के. सी, दिस इज द इमेजेस. इमेजेस के अंदर से ही बोलता है कि बताओ आपको क्या यूआरएल चाहिए. तो अब ऐसे करके ढूंढना कितना मुश्किल काम है, देख रहे हो. तो लेट्स मेक इट इजी. डेटा डॉट कीज. डेटा के अंदर क्या क्या कीज अवेलेबल है, डेटा, पेजिनेशन, मेटा. तो डेटा के अंदर जाकर डेटा मिलता है, उसको एक अलग वेरिएबल में रखते हैं. लेट्स नेम इट एज इमेजेस.
अब इमेजेस के अंदर क्या है? इमेजेस इज अ लिस्ट। तो इमेजेस की लेंथ चेक करते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेजेस। दैट इज 2, क्योंकि आपने 2 इमेजेस मांगे। तो इमेजेस की 0 इंडेक्स पर जाते हैं और वहां एक और डिक्शनरी है, उसमें देखते हैं क्या क्या कीज है। अब ये पूछते हैं बताओ क्या चाहिए। आई वॉन्ट इमेजेस के अंदर जाना है और उसके अंदर इमेजेस है। इमेजेस के अंदर क्या है? फिर से इमेजेस और यूआरएल्स भी हैं। तो लेट्स डू स्क्वायर ब्रैकेट इमेजेस। अब फिर से बहुत सारा डेटा मिला, तो उसकी भी 0 इंडेक्स पर चलते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज की बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं। अब ये देखें कितने साइज अवेलेबल है। ओरिजिनल साइज, डाउन साइज लार्ज, डाउन साइज मीडियम, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग साइज की इमेजेस दे रही है मुझे। तो आई वांट ओरिजिनल। ये मिला आपको ओरिजिनल। अब ओरिजिनल में भी क्या चाहिए? यूआरएल, ओरिजिनल इमेज का यूआरएल। सी दिस इज हाउ आई विल गेट द यूआरएल ऑफ द इमेज। सो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल काम था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एपीआई कॉल करते हैं इट्स नॉट इजी थिंग। ठीक है, सो यू हैव टू सर्च इनसाइड द एपीआई। आपको अंदर जा जाकर देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या डेटा मिला है, कहाँ मिला है, कैसे मिला है, तो देखना पड़ेगा अंदर जाकर। ओके, सो फाइनली दिस इज हाउ यू विल गेट द इमेजेस। तो पहला काम क्या था? सबसे पहले यू नीड द डेटा। लेट मी शो यू। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज दिस। तो सबसे पहले आप ये लाइन लिख दो। आफ्टर दिस जस्ट कॉपी दिस। और अगर इसको लूप में करेंगे तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इमेजेस यू विल गेट दी पाथ। अब पाथ वेरिएबल में क्या आने वाला है? पाथ वेरिएबल यू विल गेट दी ओरिजिनल पाथ ऑफ द इमेज दैट यू हैव टू डाउनलोड। जो मुझे डाउनलोड करना है ना, वो फाइनली मुझे मिलने वाला है पाथ वेरिएबल में। नाउ लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिख देते हैं आई। 2 इमेजेस के यूआरएल मिलने वाले हैं। सी दीज आर दी 2 इमेजेस दैट आई एम गोइंग टू डाउनलोड। डाउनलोड करने का कोड आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। व्हाट इज द कोड? रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रिट्रीव। और रिट्रीव के अंदर क्या आता है? पाथ एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द नेम ऑफ द इमेज। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर img अंडरस्कोर करली ब्रैकेट्स ऑफ आई डॉट png करके सेव करेंगे इसको, और स्टार्टिंग में लिखकर आ जाते हैं f। नाउ फाइनली इट विल डाउनलोड द इमेज फॉर यू। अब मैं पहले इमेजेस फोल्डर के अंदर जाकर सारी इमेजेस डिलीट कर देता हूँ। ओके, हाउ मेनी इमेजेस यू वांट टू डाउनलोड ऑफ टॉम एंड जेरी? आई वांट 20 इमेजेस ऑफ टॉम एंड जेरी। And let's print how many images are downloaded. We downloaded one. Let's see. Images are started to download. So this is exactly what happens when you search anything on the WhatsApp. जैसे आप WhatsApp के GIF में कुछ सर्च करते हो, यही तो होता है। आप एंड कुछ सर्च करते हो, अब वो बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत, क्योंकि छोटे साइज की इमेजेस होती हैं। ये बड़े साइज की इमेजेस हैं। हम छोटे साइज की इमेजेस लेके आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। सो यू कैन सिंपली स्टार्ट सर्चिंग फॉर एनीथिंग एंड यू कैन ओपन देम। ये सब GIF इमेजेस हैं, देखो। ये GIF थी ना? अच्छा, ओके ओके ओके, मैंने PNG लिख दिया है। हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए था? GIF। सो इट्स अवर मिस्टेक, हमने यहाँ GIF लिखना चाहिए था। तो PNG लिख दिया, इसलिए क्या हुआ है? वो रिजल्ट ठीक से नहीं आया। तो ये दोबारा चलाएगा और इमेजेस को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट रिप्लेस। अच्छा अच्छा, कॉपी बननी शुरू हो गई। एक्चुअली रिप्लेस भी नहीं, कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। तो पहले डिलीट कर देते हैं सबको एंड एग्जीक्यूट अगेन। नाउ फाइनली इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द GIF इमेजेस। अब ये जो इमेजेस आएंगी ना, ये GIF इमेजेस होंगी। लेट्स सी।
ओके ओके ओके, समझ आया सब लोगों को? सो दिस इज हाउ वी हैव डाउनलोडेड द इमेजेस। अब आप यूजर से इनपुट लो, पूछो बताओ क्या चाहिए, किसका आउटपुट चाहिए, तो यहाँ जाके रिप्लेस कर दो। जो भी मुझे चाहिए होगा आई विल राइट हियर, तो यू विल गेट द images of that particular thing whatever user will। okay, so this is how API calls work। ये होता है भाई API कॉल का काम करने का तरीका। तो एक बार मैं कोड को थोड़ा सा रिकैप कर दूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले एक यूआरएल था जो हमें किसने दिया, गिफी ने। देन गिफी ने ही हमें बताया कि ये पैरामीटर्स हमें चाहिए जिसमें कि आप एपीआई की सेट करो, बताओ क्या सर्च करना है, और लिमिट यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, उसके बाद ये जो तीनों चीजें हैं ना, इनको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग अ ज्वाइन, यूआरएल, क्वेश्चन मार्क एंड पैरामीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइनल पाथ होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क से सेपरेटेड होता है। ओके, अवर पाथ इज अपडेटेड, हमारा पाथ अपडेट हो गया है। बट ये एट द एंड क्या करेगा, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा, उसमें जाकर लिख देगा क्यू इक्वल्स टू टॉम एंड जेरी। ये ऐसा इंटरनली करने वाला है, ठीक है? तो हमने नहीं करना, हम इसको छोड़ देते हैं। आफ्टर दिस, जब पाथ क्रिएट हो गया उस पर्टिकुलर एपीआई का जो हमें चाहिए एग्जैक्टली तो इसने उस यूआरएल को रिक्वेस्ट किया, बदले में वहां से डेटा आया, उसमें से रिस्पॉन्स निकालकर, जेसन निकालकर, डालकर आपको दे दिया। देन हम डेटा के अंदर एक और की मिलती है जिसका नाम भी डेटा ही है। ये सब प्री डिफाइन है। ये सब कौन दे रहा है? गिफी। गिफी कहता है मैं डेटा दे रहा हूं ना, उसमें एक और डेटा है। आप डेटा वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, बट आई एम गिविंग यू डेटा। अब डेटा के अंदर उतनी इमेजेस होंगी जितनी आपने मांगी। यू सेड मुझे 20 इमेजेस चाहिए, सो आई हैव रिटन इमेजेस स्क्वायर ब्रैकेट आई। देन उसके अंदर इमेजेस नाम की एक की है, उसके अंदर ओरिजिनल नाम से एक की है, और उसके अंदर यूआरएल के नाम से एक की है। फिर फाइनली मुझे उस इमेज का यूआरएल मिलता है जो मुझे डाउनलोड करनी है, और यूजिंग यूआरएल रिट्रीव आई हैव डाउनलोडेड द इमेज। दिस इज द होल कोड टू डाउनलोड द GIF images. Comma. Where exactly you're talking about? Quotes dot join, before dot join, why we use those commas? These quotes. Actually, join is a method of string. Join क्या है? String का एक method है। तो अगर आपको strings को, मतलब 4 से 5 strings को concat करना है, तो you have a method known as join। आपको join नाम का method होता है, इसके थ्रू आप concatenation कर सकते हो। सी, आपने लिखा डॉट ज्वाइन, अब ज्वाइन के अंदर जाकर एक लिस्ट पास कर दो जिसमें लिखा हुआ है हेलो कॉमा वर्ल्ड, लाइक दिस, और इसमें डाल देते हैं एक स्पेस, तो ये हेलो वर्ल्ड को स्पेस के साथ ज्वाइन कर देगा। ओके, तो आपने खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, तो एक साथ आ जाएगा। ऑल राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सभी लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस, दे आर नहीं, एक्चुअली क्यू, एपीआई की एंड लिमिट इज प्री डिफाइंड बिकॉज ऑफ गिफी। गिफी के अंदर वो प्री डिफाइन है, आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हो, बट दिस क्यू यू हैव टू राइट। ओके, वी हैव टू राइट क्यू, एपीआई की एंड लिमिट, दिस इज प्री डिफाइंड, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ यूआरएल। जैसे अब यहाँ सर्च है, सर्च लिखना मैंडेट है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ यूआरएल दैट इज कमिंग फ्रॉम गिफी। ओके, एवरीवन, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?
सो नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस। अब आप लोगों के पास बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। What you guys have to do, I'm giving you one homework. These are defined in Giphy package. Giphy is not a package. Giphy is not a package. Giphy is a API. ठीक है? Giphy तो एक API है, ये उसके अंदर defined है सब चीजें। In path wise there are question mark in between the codes. Question mark basically क्या होता है ना कि let me show you one thing. Suppose let's go to Flipkart. ठीक है? यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, आईफोन सर्च किया था हमने। सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कैन यू सी दिस? सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू दिस, देख पा रहे हो आप ये? तो हमेशा ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मार्क करके पास की जाती है वैल्यूज यूआरएल के अंदर। ये यूआरएल का सिंटेक्स होता है। आप गूगल पे कुछ सर्च करो, फ्लिपकार्ट पे किसी भी जगह कुछ भी सर्च करो, आपका जो यूआरएल होगा, एड्रेस बार होगा, वहां क्वेश्चन मार्क कर करके चीजें जाती हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ यूआरएल। तो यहाँ पे ऐसा सिंटेक्स बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू टॉम एंड जेरी, क्वेश्चन मार्क एपीआई की, ऐसे करके सिंटेक्स बन जाएगा इसका। ओके, तो क्वेश्चन मार्क इज पार्ट ऑफ द यूआरएल सिंटेक्स। एड्रेस बार पे जो चीजें ट्रेवल करती है ना, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, उसको क्वेश्चन मार्क से सेपरेट कर देते हैं ये। ओके, और बताइए भैया, एनी अदर क्वेश्चन? लेट मी अपलोड द कोड एज वेल। मैं आप लोगों का कोड भी अपलोड कर देता हूँ साथ साथ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन होमवर्क, दैट इज न्यूज एपीआई। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोगों को न्यूज एपीआई पर काम करना है। यू हैव टू वर्क विद दिस न्यूज एपीआई। यू हैव टू रिट्रीव द डेटा ऑफ न्यूज। ओके, दिस इज द यूआरएल। वंस यू लॉग इन यू विल गेट द एपीआई की। आपको एपीआई की मिलेगा और बदले में आपको न्यूज मिलनी शुरू हो जाएगी। नाउ यू हैव टू प्रिंट द न्यूज। अगर आप सर्च करोगे ना हिंदी न्यूज एपीआई, तो यू विल गेट द सेम वेबसाइट विद हिंदी न्यूज। आपको हिंदी न्यूज के साथ ये वेबसाइट मिल जाएगी। सो दिस इज द यूआरएल दैट यू हैव टू हिट। आपको ये यूआरएल हिट करना है, इसमें आपकी एपीआई की होगी और यू विल स्टार्ट गेटिंग दिस हिंदी न्यूज। अच्छा, इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो इट विल आस्क यू सब कैटेगरीज, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स की आपको किस कैटेगरी की न्यूज चाहिए। ये सब कुछ आपने करना है और इंटीग्रेट करना है अपने चैट बॉट के साथ में। ओके, दिस इज योर होमवर्क टू वर्क विद द न्यूज एपीआई। आई एम शेयरिंग द यूआरएल इन चैट as well as I'm showing you one more thing. Basically we are also running a platform known as skill risers. हम लोगों का ना एक खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्किल राइजर्स। स्किल राइजर्स पर हम लोग अपने कोर्सेज अपलोड करते हैं। कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ कोर्सेज पेड होते हैं। जैसे फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न रिलेटेड टू पाइथन समथिंग, जैसे पाइथन के साथ आप कुछ और सीखना चाहते हो, तो आई हैव अपलोडेड फ्यू ऑफ माय कोर्सेज जस्ट लाइक यूडेमी है ना, बिल्कुल ऐसे। और ये ज्यादातर कोर्सेज आपको हिंदी में मिलते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर skillrisers.com। ओके, इसमें आपको पाइथन, डीप लर्निंग, एनालिसिस वगैरह ये सब मिल जाएगा। But what I am going to recommend you, one of the latest course of web resume. This is completely free. ये आप लोगों के लिए absolutely free है। You just have to log in and enroll for free. इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने, मैंने एक वेब रेज्यूमे बनाना सिखाया है। वेब रेज्यूमे समझते हो क्या होता है? Do you understand what is a web resume and what is the weightage of a web resume? See, this is what I have taught in this particular section और ये free है complete। मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर करता हूँ। और आप लोगों ने इसके अंदर सोचो अपना, अगर आपको खुद को जॉब चाहिए कल को, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, जो भी अपने बारे में दिखाना चाहते हो, तो कब तक अपना वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट बनाते रहोगे? कब तक वर्ड फाइल में रिज्यूमे बनाओगे? इट्स नॉट लाइक, अब आप आज की डेट में ये सब नहीं किया जाता। आज की डेट में चाहिए वेब रिज्यूमे। ठीक है, तो दिस इज द वेब रिज्यूमे यू आर गोइंग टू लर्न दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जाना है, अपना वेब रिज्यूमे बनाना शुरू करना है। इसके लिए HTML CSS की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको HTML CSS की नॉलेज है तो गुड, नहीं है तो उसके भी दो सॉल्यूशन है। वन इज अ पेड सॉल्यूशन, वन इज अ फ्री सॉल्यूशन। पेड सॉल्यूशन ये है कि मेरा एक यूआई का कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर, ये 999 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपए का एक बारी में लोग पिज्जा खा लेते हैं आज की डेट में। तो 1000 रुपए में यूआई पूरा, HTML5, CSS3, देन लिंक्डइन,
ये सब कैसे बनाया जाता है। लिंक्डइन एंड ऑल, लिंक्डइन, हेल्थ कार्ड, फ्लिपकार्ट, इन सब के रेप्लिकाज हैं इसमें। ये कंप्लीट कोर्स है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ वीडियोस देख सकते हो। मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। हमारे HTML ट्यूटोरियल्स हैं, CSS ट्यूटोरियल्स हैं, उनको आप देख सकते हो। दे ऑल आर लाइक ऑन यूट्यूब, तो ऑब्वियसली फ्री होगा। तो यू हैव ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ एक बार। दिस इज द ब्रेन मेंटल्स लिंक हियर। मैं आपके चैट विंडो में शेयर कर रहा हूँ ये सारे लिंक। ओके। ओके, सो यू ऑल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब रिज्यूमे। आज की डेट में देखो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो आपको अपने वेब रिज्यूमे बनाने शुरू करने होंगे। ठीक है। एंड द होमवर्क ये कॉल एज वेल। हाँ, आई विल शेयर ऑल दीज लिंक्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ये सब आपको आप यहाँ से क्लिक करके अपने पास रख लो ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करा दूंगा। ओके। तो लेट मी अपलोड द कोड्स ऑन गिट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई हैव अपलोडेड द कोड्स ऑन गिटहब। ये मैंने आप लोगों का कोड गिटहब पर अपलोड कर दिया है। एंड मेक श्योर टू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम होगा, सैटरडे एंड संडे। ओके। ऑल राइट, सो आई थिंक विल वाइंड अप द सेशन नाउ। सेशन वाइंड अप करते हैं एंड देन Thank आई you, विल सी यू Ravikant ऑल। sir. ओके, थैंक यू मैम। You delivered all the topics in a very simple and easy way. I hope participants are enjoying the session. And participants, you got ample amount of time to clear your doubts. All right. So keep studying. One thing I want to announce you that today only 36 participants was present. So that is not allowed. If you want completion certificate, you have to attend all the sessions. Otherwise, it will create a problem to distribute the certificates to you all. And if you miss your session, if you're missing your first session, then when you come for second, it may possible that you won't understand the topics. So be regular, be consistent, then only you can understand what sir is teaching to you. So let's wind up for today. Thank you, sir. Thank you, Thank you मैम, थैंक participants. यू एवरीवन।